Hello, good afternoon on this bright, sunny Friday. So, I'll wait for a couple of people to join before I start ranting, and I'll be open and honest. I am going to rant because the topic is horrific. The topic is sensitive. So if you've got sensitive ears or are feeling emotional or sensitive about the topic of twishasharma, then this live probably will not be for you. I'll wait a couple of minutes. Maybe someone will join, maybe not, but I've deliberately titled this live Mothers-in-Law from Hell. I've deliberately left out Dwisha's name from the title because this isn't about that lost soul as such. This is more about what led to that soul departing the earth plane and the role of her, what seems like a soulless, absolutely soulless mother-in-law. 31-year-old, or maybe I think 31 or 32-year-old bride of 5 months. That's barely 24 weeks. Has lost her life because the mother-in-law was a toxic control freak and a very powerful toxic control freak in terms of her occupation, her social status, her social standing. So it's a real sad loss. But this, I mean, why would you take someone's daughter into your home and then basically, allegedly, obviously, to stay within the confines of the law, I have to say, allegedly, although I have just seen on the news that the young girl's absconded husband has surrendered. And you know what's really sad? The media, they've gone into some form of competition. So I'm talking about the mainstream media. Mainstream media have gone into a competition of who reports what first and breaking news and, who the mother-in-law engaged with first, or who the girls and parents and siblings and friends, who they engaged with first, and who got that first footage of the absconded husband in the courtroom. Because for them, these are just headlines, ratings. The last couple of days, I've seen some real hard-hitting, emotional, borderline professional news coming out from the major, like mainstream media, in terms of tackling the mother-in-law head-to-head, challenging her on her behaviours. And we're not talking about behaviours in terms of the accusations that have been levelled at her, but actually her behaviour while she's being interviewed. She's very familiar with the law, and thus her and her
her and her son. Hello, Richa. How are you, gorgeous? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੇਂਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ 31-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ 24-25 ਹਫ਼ਤੇ। ਸਿਰਫ 24-25 ਹਫ਼ਤੇ। 24-25 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। But I will, for the sake of this live, I will use the word alleged, ਹਨਾ। And ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸੋਜਨੀ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨੋਹਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 31-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, established professionally, ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੱਸੋ? ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿੰਦ ਜੀ, ਹੈਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੌ, ਹੈਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਿਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਦਾਂ ਆ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ, ਜਸਟ ਫॉर ਕੰਟੈਕਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ। if I said it in English, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ they see him as some sort of subordinate ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਮਾਉਣੀ ਏਦਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। So it's basically to assert dominance, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। So ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ benefit of the doubt ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਊਂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦ ਡਾਊਟ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਹਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਟ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਫੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? Why do you get them married if all you're going to do is resent these girls and be hostile to them? ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਆਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਆਪ ਰੱਖੋ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਹਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ, somehow maybe they might get out of it, legal loopholes, corruption, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕਰਪਟਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਨਿੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਾਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੱਜ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ 9 ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਡਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਾਡਰਨ, ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨੌ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਲੜਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਿਟਲਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜੱਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ God forbid there was any sort of domestic issues, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਹਾਂ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ constantly criticize and ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਐਸਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤੀਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਸੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ?
है ना, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੈਨ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ? ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। Oh no, hello Rich. Oh, I've got Rich Hello. and Rich. Hello. 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 हेलो। हाय। Hi. आप प्लीज I was कंटिन्यू just करो, फिर मैं बाद में बोलती हूँ। मैंने अभी ठीक है, लगाया है, बस अभी ठीक लगाया है, है। आई हैव जस्ट ठीक हर्ड है, वाला पार्ट कि पहले ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर अगर लड़की दवाई ले तो फिर उसको फिर दवाई को लेके बदनाम करते हैं। तो आप हाँ, कंटिन्यू करो, फिर मैं बीच में मैं फिर बाद में बोलती हूँ। ठीक है, okay Rich. ओके। So ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। She didn't get out in time. She didn't get out. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਨ ਇਮਕਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। That's the truth. ਹਨਾ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੋਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ she did the girl a favor. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਸ ਆ, ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭੰਗੂ ਤਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਏ ਆ। ਹਨਾ, I'm not in favor too much of talking about the Preeti topic, but ਇੰਨੀ similarities। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। इट इज नॉट अबाउट जस्ट प्रीति एंड ये वाला केस या थर्ड केस। द थिंग इज, जब फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की रिबेल करती है, चाहे वो डोमेस्टिक डिस्प्यूट की वजह से हो, चाहे वो लड़की अच्छी हो, चाहे वो लड़की अव्वल नंबर की मतलब सेंट हो, या फॉर एग्जाम्पल से यू आर माई सास, ओके, एंड आप मेरे को कुछ बोलो कि अच्छा रिचा ऐसे नहीं खाना, वैसे खाना है, ये नहीं करना, वो करना है, और मैं कहूँ नहीं, मेरे हिसाब से आई एम ओके। या फॉर एग्जाम्पल आप अगर रिलीजियस हो एंड मैं एग्नोस्टिक हूँ एंड आई एम नॉट विलिंग टू डू द पूजा और द व्रत दैट यू बिलीव इन, तो मैं क्या होंगी, मैं कैरेक्टरलेस बन जाऊंगी, यू नो। ये चीज नॉट जस्ट लिमिटेड टू त्विषा एंड प्रीति एंड दीपिका, इट इज इन एवरी फैमिली वेयर द गर्ल इज रिबेलिंग। हल्का सा रिबेल करो, आप अव्वल नंबर के हरामखोर बन जाओगे। हल्का सा रिबेल करो, अरे इसको तो कुछ खाना बनाना नहीं आता था, अरे भैया मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे को बोला गया था कि ये तो बस पोहा ही बनाती थी। The son, the husband was completely okay with पोहा, but considering कि अब हमको इस लड़की को अपने घर में नहीं रखना, तो हम बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। So that is the scenario कि जब तक you suit me, जब तक you suit my family, जब तक I know कि हाँ चलो बहू है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो एडजस्ट कर रही है। जिस दिन लड़की एडजस्ट करना बंद कर दे तो उसकी माँ बहन कर देते हैं। एंड अनदर थिंग, दिस वाज टोल्ड टू मी बाय अ साइकियाट्रिस्ट इन 2015। जब कोई लड़की कहीं पे भी जाती है, लड़की नहीं कोई इंडिविजुअल अगर शादी करके जाता है किसी नए फैमिली में, या उसको नई जॉब मिलती है, सो न्यू ऑफिस एनवायरनमेंट में, या से शी शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर आर न्यू नेबर्स, दैट इंडिविजुअल लड़का या लड़की फेसेस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर टू द सेंस कि अगर आपको सपोर्टिव सिस्टम मिल गया आसपास, सपोर्टिव कलीग, सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव नेबर्स, तो you will not have that adjustment disorder. If you do not get that support system, तो the girl is in a new place, the man is in a new place, है ना। तो जो वो फील करती है, जिस तरह से फिर वो चाहे रिबेल करे, फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन हो जाता है। इट्स अ साइकियाट्रिक टर्म, साइकोलॉजिकल टर्म। तो फाइट और फ्लाइट जब वो होता है तो लड़की जो भी अपने तरीके से रिएक्ट करती है, तो क्या कहते हैं, अरे वो तो पागल थी,
हाँ, yeah. This was Yes, told to me Papa. by a psychiatrist. And कोई भी अगर उस मदर इन लॉ को डिफेंड करे, she is not worth defending, she is only following her training, the training she gets as a judge, because वो रोज ऐसे केसेस प्रॉब्ली देखती थी, ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल्स देखते हैं या सिविल केसेस आते हैं, आई डोंट नो द लीगैलिटीज ऑफ इट ऑल, लेकिन एक जज अगर इतने साल से अगर कोई काउंसलर है, ठीक है, लेट अलोन अ जज, तो will they not be used to people getting hyper and everything? So Well, that is how yeah. she was so chill. Well, that's one perception, or it could be that allegedly she's a cold-blooded murderer. बातों वो क्या कहते हैं, अपने अपनी नजरिए के होती है। हेलो स्वरा, हेलो लेडी, लेकिन जहाँ क्या एक चल चीज रहा और, है। इसमें हम नजरिया भी नहीं डाल सकते हैं, वो अपना ओपिनियन दे रही है एज इफ इट इज अ फैक्ट कि वो स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयां खा रही है, वो क्या कहते हैं, जो दवाई दी थी उसको, वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स लेते हैं, जो दवाई का नाम उस पागल औरत ने बोला था, वो स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, एपिलेप्सी, पता नहीं व्हाट नॉट डिजीजेस के लिए इसको देते हैं, और उसने उसका सीधा क्या क्रक्स निकाला कि वो तो स्प्लिट पर्सनालिटी थी। बिच, तेरे को स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब पता है? ये स्प्लिट फिर पता क्या पर्सनालिटीज तो ऐसी होता है है, आपको? सास से होती है, बहन की टकियां गाली खाएंगी। आई एम सॉरी, स्प्लिट नहीं, पर्सन, सॉरी, तभी तो यहाँ किया है, नहीं तो मैंने रिचा को बोलना था, लेकिन मैं उसका पैनल नहीं खराब करना चाहती। ऐसी ना, ऐसी सासों को, ऐसी माओं को, ऐसे पतियों को, और ऐसी नंदों को, या इवन ऐसी बहू, एक वो भी होता है कि जेठानी देवरानी, यू नो, देवरानी के साथ हो रहा है, जेठानी इज लाइक हाँ कंट्रीब्यूटिंग, ऐसी औरतों को ना डूब मरना चाहिए, और अगर डूब मरना नहीं चाहते तो फिर ऐसों को बॉयकॉट करना चाहिए। बट हमारी सोसाइटी ऐसी फक्ड अप है कि ऐसों को करते हैं, अरे चलता है ये तो, यू नो, रिवाज है। ये हम हमारी सुनते हैं ना सोसाइटी वनिता के सब पैनल कुछ पे। जस्टिफाई करने में लगी हुई है, सब यस, कुछ जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं ये हाँ, लोग, इन्होंने क्राइम को नॉर्मल बना दिया है। there अरे you मैं go. आपको बताऊं रिचा जी, मनीता के पैनल पे बोला जा रहा है कि घूंघट तो जस्ट वो है, हमारा हमारा ट्रेडिशन है ये, घूंघट, घूंघट हाँ, तो हमारा खुद क्यों नहीं ट्रेडिशन लेती है। फिर, खुद क्यों नहीं लेती ये? अपनी बारी इनके ससुराल वाले अच्छे हो जाते हैं, वो मना नहीं, वो कहते नहीं है घूंघट करने को, लेकिन हाँ जो कहती हैं वो करना पड़ेगा। क्यों भाई, इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या अगर घूंघट में ही रहना है तो? नहीं, ऐसी ये इंडिया का ट्रेडिशन है, तो डायरी भी इंडिया का ये ट्रेडिशन ना है। गंदी औरतें, ये गंदी औरतें जो खुद किसी काबिल नहीं है, वो बस घर पे बैठ के ये चैनल चला रही है जी, वैसी ही मेंटालिटी की औरतें आती जिन्होंने निकलना नहीं है बाहर, लेकिन हाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। जो इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, काम करती हैं, कमाती हैं, मॉडर्न है, वो लड़कियां इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। कोई भी, और अगर चाहे वो मॉडर्न ना भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं नहीं उनको सुनती, राइट, सीधा सीधा मैं नहीं, नहीं, लेकिन I'm getting एक नो, निंजी रुको, जो भी जस्टिफाई करता है ऐसी चीजों को, हाँ, उसकी बात करते हैं, चाहे ये let है me चाहे finish. नॉर्मल सोसाइटी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं ये कह रही हूँ, मैं उन लोगों को नहीं सुनती, लेकिन अगर उन लोगों ने जिन्होंने प्रीति की एन मिट्टी पलीत कर दी गंद पाके, the same sort of gand that this judge has done for her now Yes. deceased daughter-in-law, यस, किस मुंह से वो इस केस का जिक्र भी, मैनू नहीं पता उन्होंने नहीं जिक्र कर रहे किया भाई, या नहीं कर रहे, हेलो, नहीं कर रहे, तो नहीं। क्यों चोर ਨੂੰ अपना पाला भी same पंजाबी, but there's one, मैं ਨਾਂ नहीं लूंगी, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, the woman's being defended. I'm like, my head आवाज चली गई। नंद जी, नंद जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। शायद कॉल आ गया पीछे से। हाँ चलो, लेकिन मैं आपको आ बताऊं, रही मेरी? हाँ मेरे को आ रही है। ऐसी औरतें अगर कोई है ना, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, जो कहेंगी नहीं हो सकता है ये हो। अब जैसे वो दीपिका करके एक लड़की है,
ग्रेटर नोएडा में, उसकी हाथों पे पैरों पे डंडों के मार के निशान थे, उसके पेट की तरफ एक तरफ ऐसा होल सा हो रखा है विच इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे स्क्रू ड्राइवर या कुछ उसके घुपा गया है, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज इट्स अ होल, स्मॉल होल। एंड उसकी दादी सास आके कह रही है कि वो उसका कोई लड़ाई वड़ाई, खास लड़ाई नहीं होती थी, उसका ईगो बड़ा हाई था कि वो खाना वाना नहीं बनाती थी, अब शादी तो की है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो अब ये वाली लड़ाई होती थी, ऐसे कोई ज्यादा बात नहीं होती थी, दादी सास ये कह रही है, ठीक है। और ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल हु विल सपोर्ट दिस सिनेरियो आल्सो कि हाँ शादी की है, शादी अब तो इसलिए करते हैं कि बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, अब इसके लिए भी नहीं करोगे तो फिर क्यों करोगे, वगैरह वगैरह नॉनसेंस, ऐसे गंद, मतलब जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी भौंकते हैं ना ये लोग। तो अब कोई भी अगर इसकी सास को भी जस्टिफाई कर रहा है, आई एम श्योर कल को ये अगर प्रूव भी हो गया ना कि एम था, उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि हाँ उसके मल्टीपल अफेयर्स थे। अरे भैया शादी से पहले, मैं फिर से गंदी गाली दूंगी, शादी से पहले अगर लड़की का अफेयर है, हाउ इज इट रॉन्ग? शादी के पहले है ना, शादी के बाद अगर वो अफेयर कर रही है तो फिर तुम उसके पीछे पड़ो, तो तुम उसको डिवोर्स दो। और जो जमाना है आजकल, लड़कों के अफेयर भी है, लड़कियों के भी है ना। हाल देखो, व्हेन यू आर इन अ मोनोगेमस रिलेशनशिप, तब अगर ये सारे क्लेश हो ना, देन दैट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइबल कि देखो हमारी बहू क्या कर रही है। वो शादी के पहले उसका कोई अफेयर था, फॉर वॉट एवर रीजन, इट वॉज एन अफेयर, इट वॉज अ वन नाइट स्टैंड, इट वॉज एनीथिंग एट ऑल, हु आर वी टू जज? इट वॉज हर बॉडी, हर लाइफ। आई मीन वैसे तो आप इतने वो बनते हो, आई एम फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन दैट, देन यू नीड टू बी प्रोग्रेसिव अबाउट दिस ऑल्सो। इट्स नॉट अबाउट वेस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न कल्चर, एंड हमारे कल्चर में तो सती प्रथा है ना, एक टाइम पे सती प्रथा हुई थी, राइट? तो देयर वर पीपल रिबेलिंग अगेंस्ट सती प्रथा, और फिर वो सती प्रथा बंद हुआ ना, बंद हुई। अब ओके, देयर विल बी पीपल जो कहेंगे ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, वन नाइट स्टैंड्स आर नॉट वेलकम इन आवर सोसाइटी, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू बी लाइक कि नहीं यू शुडंट हैव डन दिस, हाउ डेयर यू डू दिस। जो हो गया सो हो गया, यू गॉट मैरिड इनटू दैट फैमिली। उस लड़की का, त्विषा का भाई कहता है कि आपके बेटे को ये चीज पता थी, तो you're questioning me? The sass is like, you're questioning me? How dare you question me? I was like, fuck you, bitch. सच्ची क्या ही है। और ऐसे ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं है, डर भी नहीं है। उसको पता है कानून उसकी जेब में है, रिच। हाँ, अरे पता है। ये जी तो आवाज नहीं आ रही आज ना, ये जो आदमी है, जो हस्बैंड है, ही सरेंडर्ड। हेलो, अब आवाज आ रही है? आपको आ रही है नंद जी की? हाँ, मुझे नहीं आ रही, मैं दोबारा आती हूँ नंद जी। हल्की हल्की आ रही है, लाइक ठीक है। आपने न्यूज में देखा कि वो हस्बैंड ने सरेंडर कर दिया आज, वो भी गलत कोर्ट में। Yes, or be गलत court. So they're basically rich. They're using their knowledge of the law and how to twist it. Yes. To drag this out and get out of this. And you know, my biggest fear, they will get out of it. Yeah, most likely. Yeah, and hello Swara again. जो लोग अपने husband पे depend रहती है, उसकी सोच और नीच होती है. Yes, नहीं, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, मेरी सोच नीच नहीं है। जो हरामजादी औरतें हैं, सॉरी मैं गाली दूंगी, सॉरी बट दूंगी। जो औरतें को लगता है कि मैं अपने पति के नीचे हूँ, मैं आदमी जात के नीचे हूँ, उनकी लाइफ जहन्नुम जरूर हो जाती है, क्योंकि इवन इफ आई डोंट वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई नो आई एम इक्वल टू माई हस्बैंड। But do you know how that happens? It's these, when they're suppressed and oppressed in the manner that they have been, the impact of their horrible toxic behavior from the mother-in-law, from the husband, from the sister-in-law, from koi bhi keh lo, right, is the impact then is, you know, one of the worst, the loss of identity. They start to, you know, like you start suppressing your own personality, all your choices will be suppressed because हर चीज तो किसी और की मर्जी से करनी होगी। और मैं ये नहीं कह रही that we सबको मनमर्जी करनी चाहिए and all the rest of it. नहीं, मैं ये okay Rich, hello I'm Richie, hello पलक जी, ठीक है रिचा, हाँ जी,
But that's the danger. That is the danger, that you lose who you are. कुछ नहीं बचता, कोई life में purpose नहीं बचती in बच्चियों की. They have nothing to look forward. They can't set their own life goals. They can't. And then another impact is फिर वो normal relationships भी, वो भी, they just do not know how to maintain them. And I'm not, hello Justine, be it with the husband, obviously that's the immediate impact. फिर बच्चे हो जाते हैं, they don't really know how to connect with them because बच्चों पर भी ये नहीं करना बच्चे के साथ, वो नहीं करना, and then it affects their relationship with their own family, their friends, because another thing these control freaks do, they isolate them from their family and friends. Yeah. And that is horrible. And then years later, guess what happens? When they get to that age, they repeat the loop because by then it's normalized. बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आज की एक था कि हाँ हमारी मम्मियों के ज़माने या हमसे 10 साल बड़े के जो लेडीज़ हैं वो द सैड रियलिटी इज़ कि 20 साल की लेडीज़ औरतें या यंग गर्ल्स हैव द सेम मेंटालिटी. 20 साल के लड़के आर लाइक दहेज तो हमारा वो है, जन्म से अधिकार. I'm seeing so many reels on Instagram, and I hope all these reels which are anti-dowry, anti-domestic violence, anti-harassment, I hope they are saying all this in their homes and in their localities also, because ऐसे situations को, ऐसे incidents को हम अपनी society से ही तो curb करना चाहते हैं. It's not on social media what this is happening, right? It's in our society. हमारे neighbors के घर, हमारे घर. That's how it spills onto social media. मैंने ना शोभा डे का कुछ देखा था. And she made some very I think you sent it to me, no? I did send it to a few people. I'm not sure if I sent it to you too. And but then she was talking D for about dowry, D for death, D for demand. all the Ds. So, and is this now our norm? Is this what we're going to do? A girl's now going to be so afraid of having a voice, not afraid of getting married, but what happens if girls suddenly think, you know, is Twisha ko padi likhi thi, independent bhi thi, and model she was outspoken, professional thi, sab kuch thi, na? She was strong. In a nutshell, she was a strong young lady. Agar uske saath ye ho sakta hai, then you know what? It will put some real fear into girls of committing to, such a beautiful relationship that is marriage. The problem here is not with Twisha. The problem is she asked for help. She showed signs that she was in despair, that she was facing trouble. The thing is, people around her, they were like, हाँ probably अभी नया है ना इसलिए अभी तो इतना टाइम हुआ नहीं शादी को. That's the problem. Yeah. ये ना कि time दो, लेकिन her family didn't necessarily do that. I'm feeling zero sympathy for the mother and father also crying their hearts out. Zero. Really? जब वो रो रही है, जब मैसेज में वो रो के बोल रही है कि यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ, तो क्या सांप सूंघ गया था तुमको? अपनी नाक, अब जो भी कमेंट्स में कह रहे हैं ना, अब बच गई बच्ची, अब सोसाइटी में नाक बच गई ना, उसको ही लेके घूमो. अब वो मत करो हर जगह कि हाय हमारी बेटी चली गई. Don't do that. I don't think they were those sort of backward people. No, it's not about backward. They were educated enough. They were worried about the society. That is it. They're like अभी इतना टाइम नहीं हुआ शादी को. Probably it's a adjustment issue जो शादी के हर रिलेशनशिप में होता है. ऐसे ही तो नॉर्मलाइज कर रखा है. हर रिलेशनशिप में शुरुआत में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही हो रही है कि कोई नहीं, तू चुप. अगर वो कुछ बोल दे तू मत बोला कर, कुछ चुप रह लिया कर. अगर सास कुछ बोल रही है तो फिर कुछ मत बोला कर, जो कह रही है कर ले. यही कह रही है ना, रोटी बना ले, प्लांट से पानी डाल ले, कर लिया कर, कोई बात नहीं, छोड़ दे. That really got me. मेरे गमलों को पानी नहीं. अरे जो तू उस लड़की को शादी करके घर में
पौधों को लुक आफ्टर करने के लिए लेके मेरी आई थी। सास होती ना, मैं तो अभी कह रही हूँ, मेरी सास होती है और मेरी अगर करंट सास भी मेरे को ये बोले ना, उसके पौधे उसके मुंह पे मार के आऊंगी मैं। Yeah, but not everyone's that strong, ना? नो, आई एम नॉट स्ट्रांग ईदर। हेलो, आई एम लाइक कि अगर कोई मेरे को ज्यादा बोलता है, आई स्टार्ट शेकिंग, आई यू नो, कि अगर कोई मेरे को ये बोले जो मैं नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल से पलक यादव को मैं नहीं जानती, ठीक है, आई एम सॉरी पलक अगर आप सुन रहे हो, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, तो अगर पलक यादव मेरे को कहेगी नीचे कमेंट में कि रिचा तो ऐसी ऐसी है, ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना, तो आई विल बी शेकिंग विद एंगर, आई विल बी शेकिंग विद यू नो अपसेट फीलिंग्स कि यार मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा। So अगर तनु you मेरे को know, जानती है, अगर तनु मेरे को कुछ बोलेगी, तो तनु को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि भाई आज के टाइम पे मैं किसी से एसोसिएट नहीं होती, किसी से मेंटली इमोशनली मैं एसोसिएट नहीं होती, लेकिन तनु अगर मेरे को कह देगी कल या किसी और को कहेगी कि रिचा तो ऐसी है वैसी है, ढिमकाना ढिमकाना, मैं रहूंगी यहाँ पे बैठ के कि तो I आई एम think नॉट स्ट्रांग बट आई एम दिस mm, स्ट्रांग कि उसके बाद हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद फिर वो आके मेरे साथ मीठी मीठी बनेगी, आई नॉट टेल एनीबॉडी टू फक ऑफ, बट yes. आई विल नो इन माय हार्ट कि अब एक किसको बता रही है, भग यहाँ से, यू नो। पता क्या है, मुझे ये भी एक लगता है कि इन जैसे लोगों में एक्टिंग की, कलाकारी की हाँ, रो तो रही वो थी वो क्वालिटी भैंस। घोट घोट में भरी हाँ है. And the बिल्कुल। reason I've lost it today, like I said, you know, I'm just thinking, how on earth, with everything that we've seen, and yes, we can question mainstream media. We know that they do it for TRPs, and we know that they're in competition. I got this first. This is an exclusive. Blah blah blah. Ye sab हाँ, karte screaming hain. their है ना? hearts I out. understand that. Yeah. I get that. But it doesn't matter which medium this news comes forward, right? There is absolutely, you cannot be in your right mind if you're giving this so-called judge, mother-in-law, Giribala, as Giribala, whatever her name is, the benefit of the doubt. It does not make sense. No. You will confuse the general public. Swara saying, Tanu auna hai aap par? स्वरा, But मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, बट द थिंग इज व्हेन इट इज अ रेपिटेटिव पैटर्न, ठीक है, और आप फिर भी आप देख रहे हो योर डॉटर इज इन टर्मोइल, यू नो, कि वो फूट फूट के रो रही है, वो फॉर एग्जाम्पल आपको चोट के निशान दिखा रही है, शी इज इमोशनली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इट एनी मोर, एंड आप फिर भी अपने बच्चे को कहो कि यार शांत रख, so but that is like not all. she's already breaking apart and then you are still expecting her to be like okay calm down calm down calm down, नहीं उसी के साथ रहना है, कहीं नहीं सोसाइटी ये हो जाएगी, सोसाइटी वो हो जाएगी, तब तो आप you're alienating your child ना, then don't cry once she is dead. Hello हेलो। Tanu. Hi Hello Tanu. मैं ना Tanu. Hello हेलो Henna. हेलो दीदी, कैसे हो? मैं ना सिर्फ एक बात कहने आई हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी नीचे। ठीक है. मुझे ना एक किरपन है, आपने देखा होगा, उसने ना एक बात करी थी, अभी उसने रील बनाई इसी पे कि गल चज नाल नहीं करदा, चल गल चज नाल ही नहीं करदा, मारदा मुरदा ते नहीं ना, हाँ कुटदा पिटदा, चल क्या? कुटदा पिटदा ते कोई हाँ, नहीं, हाँ कुटदा बाहर मुंह मारदा ते नहीं थोड़ो मारदा, है. बाहर मुंह ते नहीं हाँ मारदा, अच्छा Translate. बाहर मुंह मारदा है, चल बाहर ही मारदा है, घरे ते नहीं लेके आंदा, हाँ हाँ अच्छा घर ले आता है, चल ब्याह करा लिया, चल कोई नहीं रल मिल के रहता है, तू उसके साथ तेरी वो बन जाएगी, सहेली बन जाएगी, तू जो मर्जी हो जाए, कट जाए पिट जाए, पर छोड़ी ना उसको, ऐसे उसने बड़ी अच्छी रील हाँ बनाई थी, तो उसकी देखना हाँ. किरपन की, 100% जस्टिफाइंग व्हाट द मैन इज डूइंग, और लड़की अगर तेज आवाज में बोल भी दे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उसके तुम माँ पैनिक कर दो। हाँ ये आंटियां ऐसी करती हैं, ये आंटियां ऐसी कहती है जिन्होंने खुद जो उनसी वो पुरानी सोच की है कि जो मर्जी हो जाए, मर जाओ, लेकिन उसको छोड़ना मत, नहीं तो बाहर तुम्हारी रिश्तेदारों ना, में थू थू हो जाएगी। तुम्हारी डोली गई थी, तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए. दौड़ फिटे मुंह है दादियां दा, दौड़ फिटे मुंह. ये सब ਇਹ ਨਾ very well said ਤੈਨੂੰ. ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਗਈ ਖੂਹ ਚ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਟਸ ਹਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ हाँ बस वो यही चीज करता था कि वो टॉन्ट करता था वो बातें करता था जो कि आपको ना और मन में ना आपको क्या कि गुस्सा दिलवाती हैं ऐसी चीजें बोल नहीं सकता बंदा इनडायरेक्ट टॉन्ट करना आपको हर वक्त कोई ना कोई बात कर देना चलते फिरते उठते बैठते तो ये अच्छी नहीं लगती कोई बर्दाश्त नहीं करता ये सब फैमिली को लेके या किसी को भी ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ said to hurt ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੰਬੀ ਆ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀ ਖੰਭੇ ਅੰਗਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਆ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਆ ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਆ तू पतली आ तेरे आगे कुछ नहीं तेरे पीछे कुछ नहीं खाने में ये बनाती खाने में वो नहीं बनाती नमक कैसा अरे भैया हमारी माताएं सुनिए इतने सालों तक नमक ऐसा नमक वैसा नमक ज्यादा नमक कम भाई खुद बना ले नहीं अगर टाइम नहीं देना ना बच्ची ਨੂੰ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ only 5 months did you give that girl the time to adjust why should she be the only one adjusting that is my question it's a family environment which should adjust very honestly it's not just one person का काम कि 5 लोगों के हिसाब से वो adjust होते रहे या even दो initially the adjustment does come from the person who walks into a new environment but that is what is wrong na no Nancy no this is what is wrong this is what I was told by the psychiatrist I went to the psychologist I went to it's not your alone job शुरुआत से it should be like पूरी entity का job कि पूरी entity adjust करेगी यही हमारी society की fucked up चीज है कि it's like दुल्हन जो आई है वो ही adjust करेगी बाकी सारे अपने अपने उसमें राग में लाप रहे हैं नो इट्स लाइक अगर घर में 3 लोग हैं तीनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे 2 लोग हैं अगर दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे 4 लोग हैं 10 लोग हैं 10 लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे that's what's right but that's not how it pans out right yeah but we should talk about even as an individual if we start a new job or you know you're in a new neighborhood or you're going into a new family by default the person that's new in the environment does the adjustments hello Dilnaz ji and Swara you're right when husband and mother-in-law both start commenting you can't survive and in Preeti's case it was the sister-in-law as well so there was in case आप समझ रहे हो कि ये पागल कहाँ से आ गई ये बोलने लग गई है क्योंकि मुझे वो बहुत similarities दिखी बहुत ज्यादा and just the fact that they look alike that killed me hello popcorn oh love you too Dinaz ji so another Dinaz ji the comment पढ़ देनी it's very sad we have these monsters in every strata of our society we never learn as it suits us to be like this sadistic mentality yeah absolutely and sometimes as the new person just if I just give an example of say if we went how can I put this you know you're new to the area in terms of your job they're new people of all ranks background strengths and weaknesses it is very difficult to adjust and yes if you're lucky then they will help you adjust but typically in our households in these marital sort of scenarios the lone responsibility is put on the
individual that has entered that environment. And Richa is 100% right. And here you can see that, you know, my mentality has not caught up with Richa's and Tanu's and, you know, because there is a generational gap as well. So a lot of it can be. See, Rich, I'll be perfectly honest. I'm very, very transparent in the way that I am. That sort of mindset, and maybe it's because I got married so young, so young, and I didn't really understand the concept of adjustment, and that caused me problems. They didn't do anything wrong. They actually tried to accommodate me and my naivety. And maybe I was one of the lucky ones. I don't know. एक second. I'm sorry, I'm interrupting you. But So I'm used to it. No. Okay, so I don't mind you interrupting. So what you just said, some with your naivety, ठीक है? तो ये जो it's not. I'm not going to put in gender words here, but as female, as women, we are put in such such mental thought कि अगर कोई हमको वो कर रहा है, कोई हमारी बात मान रहा है, या कोई हमको अगर किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, so that is like accommodate, हमको झेल रहा है. People use this word also कि मैं तो इसको झेल रहा था इतने सालों से, या हाय मेरा पति मेरे को कितना झेलता है ना. तो these words should be out of a dictionary, because कभी भी कोई भी husband, कोई भी boyfriend, कोई भी आदमी, कोई भी सास, कोई भी ननंद ये नहीं कहेगी कि अरे मेरी भाभी तो मेरे को झेलती है, या it's like a word of, I think it's horses for courses, and that was specifically for me. I'm not generalizing this. But ये general उसमें नहीं है, ये words use होते हैं, इसलिए मैंने interrupt किया. नहीं, definitely होते हैं. लेकिन what I'm saying is, in time, as you become more worldly wise, right, and you become more self-aware, and you start understanding all those people that are new to you as well, you know, life starts to settle down. But that's all because everyone gives each other a chance. And these girls were not given a chance. They were not given the opportunity to settle with their husbands, to start creating their own dynamic, which may sometimes, you know, it culminates into something very different. And it sometimes shakes the dynamics of their existing environment, because who's to say the norm is okay and we just need to carry on with whatever was going on, whatever sort of system they had in place in their home. Ki 4 baje subah uthna hi hai, ye karna hai, wo karna hai, ye karna hai, aise karna hai. And then, because we've all got to start making our own way in life as well, no? You can't just go in as a daughter-in-law and just be that, yes, I am someone's wife, I am someone's daughter-in-law, I am someone's sister-in-law, I am someone's aunt. Who are you? Where are you? You start losing your identity, because these women, their main aim is to have the upper hand and not allow you to create your own world and create your own identity, because then that takes away their control, and that takes away that power of being, you know, the matriarch. And it is a matriarchal system, and that's the problem. And when I speak in English, obviously I can articulate it better than that's why I'm trying to avoid Hindi and Punjabi, because then a lot of what I say gets lost in translation. Did you call our system matriarchal or patriarchal? Both. It's both. No. Yes, it is. It's India a horrible mix. It is a horrible mix. If you, and I don't want to do the whole, you know, north, south, east divide, but it's different everywhere you go. We generally say patriarchal, but let me tell you, this matriarchal system is as toxic
and dangerous. Everyone's different. What would you say the scenario is in this? Patriarchal? Yeah. Okay. बेटा हमारा प्यारा बेटा सही है, अरे बहू नहीं मानती बेटे की बातें, क्योंकि उस औरत ने भी तो अपने पति को वो किया होगा कि नहीं नहीं हमारे पति परमेश्वर हैं। लगता है आपको? लगता है आपको ये She's ये seen her जज mother, साहिबा से she's behavior? seen her husband, she's seen her son, and she has completely normalized what her behavior is right now. Dinasji is saying, so proud of Preeti's mum to bring her home. She is called many names, included being a villager, but so proud of auntie. Dinasji keh rahe hai, I was just thinking, yes, it's people like Preeti's hater group, that these are the very people who encourage this kind of repulsive bullying behaviour. The worst thing anyone can say is log kya kahenge or sab theek ho jayega. Yes, absolutely, Dinasji. Dear bullying and power comes from years of this behaviour. We are a patriarchal, so husband bully over wife and she bullies her daughter-in-law, etc. We need to change the cycle. Hello, Bamiji. How are you? Nice to see you. So it's so just to sort of give context, and I don't want to rant for too long, but you know, and मैं English में, I'm going to have to say it in English because let's not conclude anything from media trial. It's too early. Yes, I agree with that too. But, and hello and welcome, Folk Heart India. इसमें भी एक चीज है, I'm not a fan of Arnab Goswami at all. Lekin it is the media pressure that the High Court started listening, the CM started listening. The family went to the CM office. They didn't have time. The CM office didn't have time for the family. Then Republic and seriously, not a fan of Goswami at all. I think he's a psycho. ठीक है? But इसने अपने TRP के लिए या जिस भी चीज के लिए इसने इतना हंगामा मचाया है, उसके बाद the CM had time to meet the family. The High Court has given them the second, the right to have the second postmortem and other things. Second postmortem. Yeah. And that's probably why the boy, the absconded husband. Yeah. अच्छा हो गई surrender करने क्या बोली? अच्छा हो गई उसकी रिजेक्ट. But I do agree कि हाँ ये media trials है और yeah I 100% agree कि this time उनका कोई फायदा हुआ है. लेकिन फोकाट जी मैं just आपको context के लिए ये I'll explain what's triggered me. And what's triggered me is, you know, for the last 4 or 5 years we've been going through a scenario where we were supporting a girl headed up by Richa, not this Rich, another Richa, who we supported and helped through a very, very similar situation, and where her mother-in-law, again, I'm just almost lost for words. Not only do they look like twins, but the behaviors were so alike. I was just gobsmacked. But you know, it's just, this is my observation. Hello, MG. Hello, beautiful. Yeah. Did anybody think? I'm sorry. Did anybody think Arnab Goswami and Barkhadat would be on the same side of a coin? I think with all of them, it's not just them, it's the Times guys as well. They're all in it for the TRPs. So, yeah, I saw Barkha shed a tear, you know, yeah, that's great. I saw Arnab irate. I saw him very compassionate. Yeah, there's all sorts of things. So, and I think in a way, MG, if you have got time, please do join us.
It's not about the girl spent 7 lakhs in 5 months, Fokarchi. That is not the point here, right? They're a well-to-do family. We do not know the dynamics behind, you know, the husband, wife, mother-in-law, etc. We are just commenting or giving our observations on what we're seeing in front of us in terms of the evidence that has been provided. Not once on this panel, right, and not once ever on the main panel that I'm associated with, do we ever base our discussions on conjecture, ever, or hearsay or gossip. So, hello, Pratibhaji. The mother-in-law could be anything, but she wasn't patriarchal. She gave 7 lakhs, enrolled her in law school. She couldn't stop the abortion. How was that patriarchal? Again, I'm going to give you context, because what I will not do on this panel is argue about what that girl was given. The only point of arguing it is if that girl was still alive to defend herself. If the girl still had a voice to speak. And yet I can argue till the cows come home for Preeti, because, you know, whether she speaks or not, or whether she defends herself or not, is now by the by. And I've been very open about it, that I'm struggling to defend someone who is beginning to get sucked into that whole manipulation by Bungle and his mother, his patriarchal mother. And they are all very, very good actors. So for context, I will tell you the reason I've kicked off, and the only time I come live is when I need to kick off, is the similarities between this case that we're seeing, where the mother-in-law, to me, and this is my opinion, it is solely my opinion and my observation, looks like a cold, soulless woman who then does the unthinkable and tarnishes. No. Hold. Hang on, let me finish, Titrit. Bolo. Then Sorry. has the audacity Yeah. to then malign the girl's character. Yes. After she has passed away. Can you even not give her dignity in death? That's what's triggered me. And then the similarities, and I've said this yesterday, this could have been Preeti. Preeti's toxic mother-in-law did Preeti a favour by throwing her out. Okay, MG, that's fine, love. I mean, I can keep it open. I was going to summarize. 1 second. Ruko. I don't know the lady or the gent who is talking about all this. चाहे वो 1 महीने हनीमून के लिए जाए, चाहे वो 4 महीने हनीमून को जाए, it was a joint decision. How many times she goes to her home, to her mother's home, that is again her decision. How much money was spent on her in 5 months or in 1 month, that was the in-laws decision. अगर उनका पैसा था या अगर उसका अपना पैसा था, तो that is again her own decision. ठीक है? And चाहे वो 1 महीने के लिए रहे अपने मैरिटल होम में या 1 हफ्ते के लिए रहे, अगर आप रोज किसी को इतना हरास करोगे, किसी पे इतनी बंदिश लगाओगे, that person will not have the mental capacity to झेलोफाई 1 day. 1 day क्या कह रही हूँ मैं, 1 घंटा भी झेलना मुश्किल हो जाता है. So giving all these explanation, all these comments that I'm seeing, I am finding them super offensive. The person might not mean it to be offensive. I am personally thinking it is super offensive because I have personally gone through this, and you don't need 1 month, you don't need 1 hafta. 1 day is enough.
When you The don't thing get the is, support, one day is enough. I am. अबॉर्शन अगर उसने किया है, I'm उस लड़की की वो थी, ऐसे आदमी का कोई बच्चा चाहेगा? ऐसी औरत का कोई ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर कोई चाहेगा? जो And again, वो दुल्हन Rich, वो उसको we don't know the reasons behind the abortion, no? And this is what I'm saying. We can only talk about what's presented to us as fact. We're not saying it is fact. What's presented to us fact, and what we're consuming via social media. It doesn't matter which platform, Hannah. And MG, you're right. Preeti was in exactly the same position. बच्चा पिछों लेके आईयां, कंजरा को भी बहुत पैसा हुंदा आ, कंजर भी इदां दे, you know, that sort of thing. There are so many similarities between this woman and what Preeti's mother-in-law did, and to date, until yesterday, मैं मुंहों कदी बोली नहीं सी इस औरत ते, पर sometimes इदां दा सिमिलर केस सामने आउंदा आ ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ. Sorry, मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੂੰਗੀ Rich, because you know I can get my frustration out in Punjabi. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ, and maybe ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ they were done by this woman, and again there's the same cold demeanor. There is that same emotionless, there's that same cold and calculated behavior. Calculated in that ek passe kuch kharab ho gaya na, or I really don't want to make this about Preeti too much, but that's what's triggered me, so I'm going to what are you cutting, Rick? Bindi. Shall I Okay. mute? Please, just for a little while, darling. Yeah. And एक चीज और, I'm so sorry Folk-Art, you have faced something similar, something worse for 9 years. I really wish you had the, I'm sorry to say this, but I wish you didn't tolerate whatever you were tolerating for 9 years, and I hope you're in a better place. And also it's nothing to do with rural and urban India, कि हाँ ये rural में होता है, urban में नहीं होता है, India में हर जगह होता है ये चीज। इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट लड़की को लगता है कि प्लीज मेरे को आके ले जाओ, प्लीज मेरे को आके ले जाओ, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, प्लीज ले जाओ। It has been seen in many families, in well established families, in poor families, middle class families, हर जगह। ठीक है? that वो ना Rich, वो ही बात आ जाती है. The most important observation I made, है ना, is you know, this harmful behavior is not tied to education or say social status. Jahe, whether someone's rich, highly educated, or from a modest or rural background, if they hold those deeply ingrained patriarchal or misogynistic, that's my word for it, beliefs, you know, they act in a controlling, critical, or hurtful ways towards the daughter-in-law or the new member of the family in their house. You know, the core issue's in their mindset. I was just about to swear then. She was completely okay with asking how dare you question me? I am going to ask if she's going to have more relationships in the future. She had a medical report. I cannot believe. It's like there was medical this report तो बहुत दूर की बात है। वो ये क्वेश्चन कर रही थी अपनी बहू को कि तू भैया अभी फ्यूचर में तो अफेयर नहीं करेगी, मेरे बेटा घर में है, तो अब आगे जाके मुंह तो नहीं मारेगी, क्योंकि पहले तो मुंह मार चुकी है। हिंदी में ये बोला जाता है, and the daughter-in-law should be okay with it. It's just that need to exercise power, isn't it, over another person, someone who could I'm potentially. getting super hyper. हाँ, तो I'm म्यूट really कर pissed off right now. थोड़ा म्यूट कर ले पुत्र। हाँ, हाँ, थोड़ा चिर। हाँ। So again, it comes to mindsets, है ना, कि किसी को dominate करना है, किसी को undermine करना है,
koi call it financial pressure. Rich, I didn't tell you to go. I just said mute it for a while. So social class doesn't really define character. These mindsets are everywhere. It doesn't matter about their background. It's about having the need to control another person and the impact on them for a lifetime. And the lifetime impact has been horrific. If I was to compare it, normally we do not compare one situation with another situation, but the similarities here, they are so strong that my stomach is churning. The girls, hello, Mountain Girl. How are you, sweetheart? Hi, Nin ma'am. I'm doing well. How are you? I'm good, my lovely. I'm just going to say one last thing, then I'm going to hand over to you because I actually need to get a glass of water. Of course, ma'am. And Folk G, I understand that you know your situation. You've been through tough times, and I'm really sorry. And I mean this genuinely. I'm really sorry to hear that. The one thing that I do not agree with is that she didn't aid and abet this situation that resulted in the girl losing her life. I'm not saying it was suicide. I'm not saying it's murder. Everything's alleged at the moment. But the biggest similarity here for me to kick off is that we have witnessed a girl being bullied in this manner, and full concerted effort was there put in place to aid and abet the end of that girl's life. And if the girl And it's didn't still have a ongoing. child, yeah, It's ongoing. yeah. And if she didn't have a child, MG, that girl would have done herself a lot of harm. Ma'am, if she didn't have a male child, that's also a distinction we need to make. Well, there's that as well, yes. There Yeah. is that as well. Yeah. Right, I'm just going to Abolo. I'm not going to mute. I really do need to get some water. I shouldn't even be talking Yeah, this ma'am, I have a little bit of time. I might have to drop off just in case I need to go back to work. But I just wanted to say a few things. First of all, this entire I've heard a lot of people, so-called very educated people, come out and say that a media trial has been done against the boy and his family, Trisha's husband and her mother-in-law, and I completely disagree with that. The media trial began when the judge, the so-called judge, the mother-in-law of Trisha, started coming out and making baseless statements that she did not have any right or authority to make against a woman who is not even alive to come and defend herself or put her point across. The fact that her brother, Major Harish Singh, is here fighting for his sister, lot of women don't even have those people. First of all, I also think that her parents should have done more. They should have taken a more concerted effort rather than her mother replying to पापा को नाक रगड़ के माफी मंगवाना चाहता है, उसके बाद her mother is replying कि पापा माफी मांग लेंगे. Wow. How are we raising our girls? कॉलेज की डिग्रियां होती हैं लड़की, जिनको आप सजा के रखते हो और फिर कोई उठाकर ले जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद. ये क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है इंडिया में कि जिन औरतों के लड़के हो जाते हैं, दे थिंक दैट they are entitled to everything in this world because now they have sons. उनकी शादी भी होगी, फिर जो लड़की आएगी वो उनका कुल भी आगे बढ़ाएगी, उनके ट्रेडिशंस भी आगे बढ़ाएगी. All of this is being put for somebody else's daughter, and that daughter, neither do you respect that girl, nor do you respect her parents, nor you respect her familial relations, but you expect her to overnight change all her loyalties, all her connections, all her emotional डिपेंडेंसीज, एंड आपको वो अपना ले और उसको आप सारा टाइम गरियाते रहो. ये क्या मतलब हुआ? दैट वुमन
rather than coming and saying that something unfortunate has happened, rather than coming and explaining why her lawyer's son is absconding, you tell me they are saying कि हम बहुत अच्छे परिवार के हैं, हमने 7 लाख रुपए खर्चे, तुमने कितना मर्जी पैसा खर्चा, तुम पढ़ाई लिखाई पे फूक रहे हो अपनी, यू आर अ लॉयर एंड यू आर रनिंग अवे. You are not appearing in front of the judge, you are not appearing in front of the magistrate, the court, and that judge, वो इंडिया की जज आके बोल रही है कि आपको पता है कि पुलिस कितना गलत करती है. ये हैं जी जो अपहोल्ड करते हैं लॉ. इनकी बात सुनो. They abuse How- it. They abuse it. No, Nind ma'am, how has this judge ever sent anyone to prison if she is coming out here on national media in front of Barkha Dutt, jisko millions of people around India and the world watch, she's coming and saying, madam, you know what police do, you're a judge. A common man coming out and saying the police does brutality is a completely different thing from the judge saying this. A judge is supposed to be an upholder of the law. And जो folk art जी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हुआ है, अभी हमें सब कुछ पता नहीं है, calling a dead woman schizophrenic is not right. No, Is not right. It's putting a mark on her dignity, her character, the character assassinations, the fact that ma'am, they she said things like promiscuity आदत हो जाती है. What do you mean by that? I have worked with prostitutes. What kind of मेंटालिटी डज दैट लेडी हैव? इनके घर का माहौल क्या रहा होगा कि वो लड़की वल्नरेबल होके कोई बात कर रही है अपने हस्बैंड के साथ. ये मुझे अबॉर्शन वाली बात पे भी बात करनी है. एक फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, राइट? वो अपनी मम्मी को कमरे में लेके गया था. आई एम गोइंग टू से दीज थिंग्स कि मम्मी मैं ऐसे करूं, अब ऐसे करके वो कंसीव करेगी नहीं ना. तो जब इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप थी, शी आस्क्ड हर हस्बैंड एंड दिस इज हर मदर इन लॉज ओन स्टेटमेंट कि उस लड़की ने तो बोला कि घर पे मत बताना, वो मुझे मना करेंगे. हर हस्बैंड ब्रीच्ड द प्रिवेसी ऑफ द कपल एंड he went and told his mom. सुबह उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, आधे पौने घंटे के बाद ये ममाज बॉयज ये शादी करते क्यों है अगर इनको अपनी मम्मियों के पल्लुओं के साथ ही बंध के रहना होता है शादी के बाद? ऐसा आदमी बाप कैसे बनेगा जो हर डिसीजन अपनी माँ से ही लेके पूछ रहा है, इतना बुढ़ा आदमी होने के बाद भी? He went and breached. And ma'am, the other thing is they are saying उसने अबॉर्शन करा लिया. What they are trying to indirect, वो ये तो कह नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी बात तो कह दी कि क्रूअल्टी हो गई. क्रूअल्टी वैसे हुई नहीं बिकॉज अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया. बट मैम, शोभा डे ब्रॉट दिस पॉइंट yesterday and मेरे दिमाग में भी 2 दिन से क्लिक हो रहा है. Twisha did not go to the doctor's office alone. She took her husband with her. She took her husband, yes. What? मतलब वो अकेले तो नहीं गई है ना, MTP कराया. इसकी मदर इन लॉ तक को पता है MTP हुआ है. There are a lot of women here जिनकी शादियां हुई हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं. And if you have lived in India and you are sexually active, you know कि MTP is very easily accessible. I know this. My father is a gynecologist. India is one of the most progressive countries in this regard for giving women a choice. Nobody even यहाँ यूएस में तो वो क्रिश्चियंस आके प्लान्ड पेरेंटहुड के सामने प्रोटेस्ट करते हैं. इंडिया में ये सब नहीं कर सकते आप. हमारे यहाँ पे विमेन को अथॉरिटी दी गई है क्योंकि जो ये बात है ना हमारे कुल को आगे लेके जाएगी, वो मिसेस जज आंटी जी, कुल को आगे औरत ही लेके जाएगी. तो औरत ही डिसाइड करेगी कि उसने अपनी बॉडी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना. एंड औरत अकेले माँ नहीं बनती है. अगर आपका बच्चा, आपका बेटा incapable है, then you should ask your son first, what have you done, why have you not given your wife that confidence that this is happening in your life. Don't go and question the girl. अपने बच्चे को क्यों नहीं पूछती हैं ये लोग? अपनी बहू से 5-6 साल बड़ा लड़का, इनको अपना ही बेटा, इनको नासमझ लगता है. ये बंकू की माँ का भी सेम हाल है. तेरा औरतां ਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ. ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਨਕੇਪੇਬਲ ਹੈ. ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੰਦ ਮੈਮ,
ਬੰਕੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। एंड his sister is saying कि मेरा भाई भी नहीं है, तो his mom is like her mom is like हाँ तू भी अपना घर देखना है, मम्मी दा की है। एंड यू नो आई हैव अ मदर, मेरे को एक सेकंड के लिए दुख हुआ उस लेडी के लिए, बट देन मेरे दिमाग में आया कि मैडम कोमा आंटी, ये जो आप जिंदगी जी रही हो ना, ये आपने खुद के लिए विश की है, you have manifested this for yourself. Your daughter is also a selfish person, your son is also a selfish person because they learnt it from the best. You are a selfish person, and selfish people ultimately remain alone. She's rigid, and that's half the problem. When you are that rigid, you cannot get on with anyone. इसकी अपने बेटे के साथ भी पहले नहीं बनती थी, पर वही था ना, बहू आ गई, पसंद नहीं आई, then she joined ranks with her नकम्मा नखट्टू मुंडा। मैम इंडिया में यही तो होता है कि शादी के बाद लड़का और लड़के की फैमिली एक हो जाते हैं, लड़की की फैमिली सोचती है कि हमारा तो ड्यूटी खत्म हो गई, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द एरिया आई ग्रो अप, कि हमारा तो काम हो गया, लड़की ब्याह दी, सब कुछ ठीक है, अब वो वहां मरे चाहे क्या। ये बात इंडिया में कितने गुरूर से बोली जाती है कि शादी करके गई है तो या तो उसकी अर्थी आएगी, या मतलब व्हाटएवर, डोली आ गई है अर्थी आएगी। व्हाट क्यों पैदा कर रहे हो फिर? You know what's really scary? अगर ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੋਮਾ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਚ। ਜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਬਚਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, मैं ਹੁਣ कहनी हाँ सच्ची बच के आई है। ओनू ही पता है, जो बंदा उस सिचुएशन में होता है वो उसी को पता होता है। और जो ये लोग छाती पीट रहे हैं बहुत लोग कि हमने सहा है, नो, अगर आपने सहा है ना, तो आपके दिल के अंदर ना और ज्यादा वो आग होनी चाहिए, वो कंपैशन होना चाहिए कि कोई और इंसान के साथ ऐसा ना हो। The buck stops with me. More than compassion, there should be empathy. We're in a world where there is absolute compassion fatigue, right? And that's across the board. But here, what really gets me is, as women, especially when we've been through similar situations, why do we lose our ability to be empathetic? Ma'am, because they probably didn't have the empathy to begin with. That I think is an issue. अभी नीचे ये एक comment है कि she aborted because she said he took a lot of marijuana. That's written in the doctor's report. The man can feel that too. So Fokart, I will apply the same exact logic here. That man had the choice to give her a divorce and go marry another incubator for his vansh. ठीक है, इतना बुरा लग रहा है ना उसको। और लड़के का क्या काम होता है, उसको क्या करना होता है? 10 मिनट की मेहनत को आप 10 मिनट की मेहनत भी क्या होती है, 10 मिनट के प्लेजर को आप 9 महीने की हार्मोनल, मेंटल, फिजिकल, सिर्फ 9 महीने की नहीं, सारी उम्र की लाइफ लॉन्ग चेंजेस को आप वो 10 मिनट के प्लेजर के साथ इक्वेट कर रहे हो। सीरियसली, this is where there is an absolute lack of awareness, and this is, you know, the points that Richa made initially, and where I said, you know, when you go into a new environment, that we should, you know, it takes time to adjust. But she's right, it's not just about that individual adjusting. Everyone has to make that
equal effort to help that bedding in period, you know, because the dynamics are going to change. If there is one new person in any cohort, in any scenario of life, then absolutely everyone needs to make the adjustment. And that's a bit of a wake-up call for me as well. Ma'am, Because it's a simple thing. Even when we bring a pet in the house, the whole family adjusts around that new living creature, right? And just echoing the mother-in-law's sentiments, even if you get a little plant in your house, you have to make a little bit of adjustment around your schedule to water it, to weed it, to look after it. So if in the arranged marriage setup in India, because I've heard a lot of things like this as well, that the mother-in-law had a right to say this because they were living together. All right, I understand. They are living together. This is a custom in India that, you know, the daughter gets married and lives in the husband's house. तो क्या एडजस्टमेंट्स की गई हैं कि उस लड़की को आपने इतना अच्छा फील कराया कि वो आपका वंश आगे बढ़ा के लेके जाए? आप एक सेम ब्रेथ में आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डुअल पर्सनैलिटी थी, वो स्किज़ोफ्रेनिक थी, वो पूजा पाठ नहीं करती थी, वो पौधों को पानी नहीं देती थी, वो कुकिंग में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन हमें उसकी कोख से बच्चा चाहिए था। You know, everything she's doing, you can't even say it's defensive. It's actually everything that she's done has been offensive. Offensive, not just because that child is no longer with us. वो तो बेचारी मर गई ना माँ बाप को ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ they will use their contacts and their corruption, ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, connections ਦਾ, and ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੈਣਾ, just like, and I have to emphasize this point over and over again, that the similarities of this and Soma and Bunku they are uncanny and shocking. And you know what really upsets me? They absolutely are. Is this the norm? Is this what we're trying to normalize? Is this acceptable? What are we doing? What are we doing to the next generation? They will lose the confidence in themselves. They will lose any sense of self if they go by these societal norms of itna waqt ho gaya, you're over 30, you know, you now need to get married. And because they get married a bit later, there's always that pressure, but it's getting too late, your biological clock is ticking. So, and then they go for it because she met the guy on a dating app, right? And what that guy failed to put on his bio in that dating app, but that he was a mummy's boy. They all are. They're mummy's boys. So they all are. Yeah. Man, the thing is, number one, मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। एक पति और पत्नी ने अपने पति को एक सिंपल बात कही है, I have conceived, do not share this with anybody. I just have a simple question कि क्या एक husband wife की relationship में इतनी dignity की expectation नहीं होती? I have seen women myself hold secrets about their husbands, whether they are philanderers, whether they are drug addicts, whether they have a million other problems. They hold them close to their chest to protect their husband's dignity. Do they not? Why do women not get the same? Why do women not get the same privilege? And it's not even a privilege. This is just a simple ask. It's a basic right. That's not a privilege. Exactly. That's a basic, it's a basic right. She's just asked कि तुम घर पे मत बताओ. और Nind ma'am, he is a mummy's boy. He couldn't keep it inside his chest for 1 hour. My question is, do these men then they say कि लड़कियों को आजकल तमीज नहीं है. The thing is, लड़के तो बिना तमीज के पूरी जिंदगी जी रहे हैं.
हम तो बोलना शुरू कर रहे हैं। हम उसकी मदर इन लॉ उसको promiscuous बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है. It's so easy, right? It's the easiest thing to character assassinate a woman. Who raised the question on the number of sexual partners the husband had? And आप कोई और बात करो ना करो, कितना राइट है उस मदर इन लॉ को ये बात बोलने का, कोई भी बात बोलने का. उसका बच्चा भागा हुआ है, उसके ऊपर हर रोज द कोर्ट इंक्रीजेस द फीस की. अगर मिला तो 10,000 मिलेंगे, मिला तो 20,000 मिलेंगे. फाइंडिंग फी लगी हुई है उस आदमी पे. हाँ, वो तो सरेंडर कर गया सरेंडर. हाँ, अभी किया ना मैम, अभी 2 घंटे पहले हुआ है. लेकिन व्हेन शी मेड दी स्टेटमेंट्स, लाइक शी सेइंग कि सारे जो वहां पे कागज हैं उस पे उसके बंदे के नाम है, मेरे बच्चे के नाम है. एंड देन ही रन अवे. These are upholders of law. She has passed judgments on other people's lives, convicted them or freed them. Mountain Girl, they're not upholders of law, they're abusers of the law. मैं थोड़ा सा फोकाट जी को मैं जवाब दे दूं. Mountain Girl, हाँ जी, फोकाट जी, मैम I'll join you back in 2 minutes. आप मुझे नीचे गिरा दो. कोई ना पुत्र, ਤੁਸੀਂ म्यूट कर लो ਮੈਨੂੰ. ठीक है, ओके मैम. हाँ जी, ओके पुत्र. देखो फोकाट जी, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਊਂਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ? You've put, she didn't abort because of the family. She aborted because she had taken drugs and was afraid of health problems of the child. This she has mentioned to the gynecologist. Right. You are making that statement with such conviction that I'm beginning to think that I've got to ask you, did you know her? Do you know her family? Jo itne conviction ke saath keh rahe ho? Or are you basing this all on this picture that has been built by the mother-in-law, either to safeguard herself or her son who absconded? If he wasn't guilty, why did he abscond? If they're not guilty, why did they make those calls to get the CCTV footage? I've seen the interview of the guy of the CCTV company, and he said hadn't heard from them for a couple of years, and also that there was some calibration issue with the CCTV, right? And then suddenly, and then why did she make so many calls to her colleagues, matlab fellow judges, and that pathetic response ke condolences ke liye tha. Condolences. You can't, if you were genuinely upset that your daughter-in-law is no longer in this world for however she's lost her life, and then you go on and you attack her character, you slay her dignity in death, तुम्हारा हक है condolence लेने का? ये जवाब दे दो. Yeah, it's not about liking me, folk art, and I don't expect anyone to agree with me or what anyone else is saying, be it the panelists or be it anyone in comments, right? Because I'm quite happy for people to disagree, but we have got to agree to disagree, okay? And I'm not saying that men don't suffer either. Yes, men do suffer. But this is in your face. It's not an invalid argument to say he was absconding. He was filing for bail in 10 days to the courts and wait. And that's because he knew how to work the system. This is a key issue. Your average man would not have known how to do this. He would have just have done one. And when I say in English, he would have just done one. He would have just done a runner. These people are playing the system. The one thing I will say, yes, let's sit back and let's watch it pan out. My biggest objection is
You attack someone's attacking a child's dignity when she's died, slaying her character. I mean, what world are these people living in? And you know why she's got the audacity to do that? Because she's got the means to fight and make these cases, and she's got that. She's got the power of connections behind her. But she's unravelled herself in public. You know, the interview she either did with Barka and all those in her face type of interviews that the other channels are doing, be it Unnubs or NDTV or anyone, you know, all the mainstream channels that are doing it. And again, you know, how genuinely are they invested in this? For them, it's TRP wars. Yeah. For normal people, this is a loss of life of a child. A loss of a life. And I am not going to go down this rabbit hole of Atul Subhash and all the rest of it, because if I start on Atul Subhash, Richa, not young rich, the little, not young rich, little rich, the other Richa, she knows how strongly I felt about that Atul Subhash case. And again, if I bring this to a close, to this point, Atul Subhash, what he did, what he said, this Soma Devi's son then basically plagiarized all of that shit and did it for his wife, and then stripped his wife of all her dignity in an hour-and-a-half podcast, right? So it just I do not want to go down this rabbit hole, and I want to stay as calm as I can. My biggest issue is that women like this, they believe they are beyond the law because apparently they are the defenders of law. Are they? Hell. They are not defending the law. They are using the law. They think they are above the law. I see popcorn coming in, but right, to close, and Rich, I'll give you back the mic before I close, but let me just close and then you can say your bit, my darling. मेरी point ये थी, and the reason कि मिन्नू इन्नी तप चढ़ी आ कि शायद मेरे मुंह ते ही आके थप्पड़ बज जाया कि जिस बीबी नू मैं थोड़ा थोड़ा डिफेंड करदी हुंदी सी कि नहीं चल ओ भी मजबूर आ नहीं कोई मजबूरी नहीं इट्स योर कंडीशनिंग ओदी भी कंडीशनिंग यही सी कि हाँ मेरे घर कोई होर आ गई आ इनू मेरे जदों मैं कहना उठना उदों ये उठूगी जेड़ा मैं कहना खाना ओ खाऊगी मेरे मुंडे ना इदां उठूगी इदां बैठूगी आ करूगी नो ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆ her rightful ਅਹੁਦਾ as a wife, and that is her not just her lawful position in that house, that she's married your son, right? You're literally trying to strip her of her vajood, her astitva, that you're nothing, you're nobody. I still rule this house. What I say is what my son will do. You're just someone here whose reproductive system I will allow my son to fucking use. And then if that doesn't work, guess what? I'm either going to throw you out the house. And if throwing you out the house isn't enough, I will then orchestrate a 5-year fucking campaign to have your character slayed. And I will take you to the brink of your life. Preeti was a lucky one. She survived. It was a blessing in disguise as this bitch threw her out the house. And you know what? I will apologize to everyone who I ever hurt by defending this fucking woman. And I will never, and you know what? There's a special place in hell. And I know a lot of people go karma, kurma, or, but tenu soma bibi, tenu tere
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵਸਣ ਡਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। As for this case, yes, we'll sit back and we'll see how it pans out, and that's it. I can't say more than that. But are they innocent? No, they're not. They're absolutely not innocent. Hey, and I'm going to ask Rich to do me a favour and go back and read everyone's comments, because I think I've wound myself up, like really wound myself up. And sorry for not reading the comments as it was going, but I think the guys in comments were talking to each other, so hopefully you'll forgive me for not being able to take the comments. And folk art, I fundamentally disagree with आपका opinion, लेकिन ये आपका observation होगा, then you're totally entitled to it. But let's agree to disagree. Hi, Shilpa. I have to add one thing. No, you can add as much as you like. I need to mute because I need to get some air to my head, Rich. Okay. So folk art, everybody heard about Atul Subhash, but at the same time, आप अगर न्यूज़ देखोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, अपना इंडियन मीडिया देखोगे, गूगल कर लोगे स्टैटिस्टिक्स, प्लीज गूगल करना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ women versus men. I don't want it to be a gender war, but women versus men में कितना डिफरेंस है। जो एक मैरिड मैन अपनी बीवी से परेशान होके एस करता है वर्ड, या उसका एम करती है लड़की, वर्सेस women के साथ एस और एम होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट ऑल इस हमारी अपनी इतनी वंडरफुल इंडियन सोसाइटी में। प्लीज देखना और मेरे को भी बताना। हमारे इंडिया में जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, द जेंडर रेशियो, women are far more compared to the men in our country. Can you imagine कितनी औरतें दब रही हैं रोज अपने घरों में, जो औरतें कभी अपने मुंह से बकती भी नहीं कि हाँ हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, कितने अमेजिंग हैं। And I'm being sarcastic right now. The number is huge. चाहे पढ़ी लिखी औरत हो, चाहे अनपढ़ औरत हो, the number is huge. It's not कि उस औरत को ये नहीं पता कि हाँ मैं बोल सकती हूँ या मेरे पास वो जबान नहीं दी भगवान ने। It's the fact कि वो इतनी दब जाती है कि उसको समझ नहीं आता करे तो क्या करे। That is what it is. Not कि she could have left. She could have left. She couldn't leave because of the conditioning that she got as a young person, or what was being told to her by her parents on a continuous basis कि नहीं कोई बात नहीं। उसके भाई ने भी यही कहा था ना उसको, उसके आज के जनरेशन के भाई ने, बाय द वे, नॉट लाइक 10 साल 20 साल बड़ा, कि होता है चलो कोई बार, कभी कभार आदमी ऐसे धक्का मुक्की हो, अग्रेसिव हो जाता है। May I jawab दे दो, Rich? You cannot mix this case with all other cases where women genuinely suffered. Hang on. Folk artiji, women suffering, they're still alive. This girl's dead.
The girl has lost her life. And then she's lost her life, and guess what? They stripped her of her dignity in death. Bogart, really? I hope the next generation, I don't want to get personal, but I am seriously inching towards being worried. Honestly, I'm not going to continue with saying what I want to say, but I hope you get the gist. So the But comments point of that's view. part of the impact. Sorry. Eh? That's part of the impact of women like this judge and like Soma Devi. The impact, the long-term impact then that they have on future generations. Now, what's the worst case scenario? That these women, basically, who are suffering and staying there, it becomes so normal, they normalize it, that when it comes to them becoming mothers-in-law, they then repeat the same behaviors because they don't know any different. And the ones who suffer in silence, you know, some have no choice, and that's heartbreaking because they have no family to back them. And again, this is the weirdest, this is the worst scenario. That the mothers-in-laws, their behaviors, they aren't dependent on social status, financial status, educational status. It's not, because their pattern's exactly the same. But the person that they're victimizing, their financial status or lack of either ends up with them suffering for their whole lifetime, or they don't have the family to back them. The impact, I cannot even begin to articulate how severe and long-reaching circumstances of these behaviours are. So it makes no difference what background these perpetrators come from, but the way they impact their victims is very different because their backgrounds matter. Some are powerful, some aren't. And I think if this child that lost her life, time was not on her side. So that's your opinion. And again, normally when I say we can agree to disagree, I can't even say I respect your opinion. I just cannot. I absolutely cannot respect what you're saying. I'll close here because obviously I have got a bit hyper. But I will go from as far up as I can to take some comments. And with all due respect, Folkart, because your comments have actually been answered on the panel or in comments, I can't repeat your comments because I disagree with what you've said. So where do I start from? Comments. Hi. So Big Rita is saying, you don't know the environment of that family, why Twisha decided to abort. Who are you to decide for a woman whether she has to abort or not? And one thing he feels bad, then part your way. Absolutely. He obviously married to have a family. Yeah, absolutely. You know, and there could have been other reasons, and I'm not going to say it out loud. Sometimes these women have a point to prove via their sons because, you know, maybe the son doesn't know if he's Arthur or Martha. We don't know. Popcorn, are you saying that the girl had issues and her husband family innocent? I'm sorry, I just noticed your messages. Never saw a Dulcibach case. I think I touched on that. And I think I also touched on the fact that, you know, Borna then decided to model his situation on that guy.
And that guy was a coward. So there, I've said it. Yes, I did. But here's discussion about Twisha's case, right? Popcorn. Yes, it was and it wasn't. I opened the live because ਮੈਨੂੰ similarities ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਬੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ many cases are not even on news from tier 2 cities. Girls are suffering. Yep. Keeping everything aside, the in-laws cannot be convicted in abetment by law. The criteria for abetment is very strict. Well, let's see how the law pans out then. Okay, because I think a couple of years ago, I made my opinions based on Preeti's case very clear. The way that girl was being harassed via the soon-to-be ex-husband, I hope soon-to-be ex-husband, estranged husband, and his sponsored channels, that was aiding and abetting the end of life for a girl that they have maligned for over 5 years. I'm okay, Shilpi. I don't know if I will be after this live, but, you know, kabhi bolna padta hai. You're also talking about her character. Yeah, you can't, you know, character assassination, or speaking ill of the dead, that's not done. That's not done. This type of woman can't handle independent modern girls, so they sympathise according to their thinking. If she was independent, she would have left. Well, she was almost about to. Time ran out. Time was not on her side. There wasn't even the slightest sign of grief on the mother-in-law's face. Yeah, I know. Cold. Popcorn, cold. Ice cold. She is a judge and an army wife. She is not an emotional person. Oh, please, 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 don't do that. You're pigeonholing women and their personalities based on their profession. Really? I know there's a certain amount of, you know, yeah, most judges are probably stoic and equally professional, but this isn't a professional fight that she's fighting. This is really personal. You know, you can't... Actually, these type of women want to watch women suffering and not take a step against this cruelty. You have to rise up. You have to. So I'll just say, folk art, India. So Richa, the lady with Jameel ID, her name's Richa. And if it wasn't for her and her raising her head above the parapet against God knows how many channels who are bullying, victimizing this girl, Preeti, that I keep mentioning, that girl would have probably taken a drastic step, because her mother-in-law and her estranged husband had orchestrated a horrible hate campaign against her that stripped her of her dignity too. And if Richa hadn't taken that step to go, well, you know what, I'm going to take you all on. I know the truth and I am going to take you all on, and I am going to stand up for this girl because that's the right thing to do. Now, if Richa hadn't, and we hadn't joined what I would only call a movement, right? Because some of us also knew the truth. And then once you get someone as strong as her, it gives everyone else the strength to say, well, actually, no, this is not right. This is not right. You cannot do this to a woman who has been removed from her home with her child. She's had no emotional support from her family, really. There's no financial support forthcoming from the husband. It's a long story. If you want the history, I'm happy to give you the history. Now, if Richa hadn't stood up and done this, Preeti wouldn't be living, she wouldn't be smiling. She wouldn't be that independent sort of strong woman that she is. I say sort of, but I won't elaborate on that.
Popcorn, being a judge or an army wife may make someone strong and disciplined, but losing a person from family is still heartbreaking. Absolutely. She shouldn't feel sad if her son goes to jail then. She's strong. Yes, there's a point. Then let's see how stoic she is. ये तो बच्ची की जान गई ना, तो इतना वो कर रही है. And you know the bit I don't understand, she says, oh, you know, you're torturing us, we're going to need psychiatric help. I think you need psychiatric help anyway, Giribala, whatever your name is, Giribala. You need psychiatric help. There is definitely something wrong with you and your son. And I think, 25 weeks into a marriage and they were going to see counsellors. I mean, there's the red flags there already. A blue moon gussa coming. I'm furious, yeah. If a person doesn't cry, that means she's evil. We all saw Manpreet, we saw Deepika, we saw Palak, we saw Trisha, and these 3 cases are just in a week as opposed to the case that happened years back. Do you want a comparison? Samosa server? Hello, oh my God. Samosa, we're furious. We needed you. Chalo. I've done comments. This isn't, do you know what? Let me put this into some form of context before I close. This isn't, the situations that we are discussing, they are not fictional crime series of, murder thrillers and all the rest of it. This is real life. This is where a child has lost her life. And, to make it worse, she's been stripped of her dignity. So before repeating all the derogatory, defamatory, inflammatory stuff about her, maybe spare a thought for a fact that there's a young girl that's lost her life. She was strong, she was ambitious, she was a professional, she had her whole life ahead of her, and time permitting, she would have gotten out of this, and then there would have been scope to rebuild her life and put this shit behind her. And that's the thing with our society. In a few weeks, in a few months' time, we're all going to forget, and it'll just be another case, and it'll be just one of these things that we will then mention in passing again when something like this happens again. So that's all from me. I normally, when I'm irate, I normally apologise. I'm not going to apologise for being irate today. I've tried really, really hard to stay calm. I'm sure I saw Rani, or was I imagining it? Huh? She's there. She is. She's there. Hello, Yeah. Rani. Hello. Hope you've had a nice sleep. But Rick, thanks for staying up Do you with know me. Fokat Thanks for personally? joining. Anji? Do you know Fokat personally? No, I don't. I think Is she like... Fokat ji, तुसी आप I think maybe Manjri ki live par honge ya where else do I go? I always pop in and say hello to Manjri and Malaji, so probably one of them. Hold. If मैं she और was... कितने तो मैं जानती नहीं मैं और if कहीं she... Suno, please, these are like golden words, pearls falling out of somebody's mouth. If she was free enough to abort, she was free enough to move out. ठीक है, मान लिया. If men don't care for kids, then it is a problem. But if they care for a child, then too it's a problem. Eh? What? Eh? What? Okay, that's fine. Fokat क्या क्या? I think Manjri ki life par hoti hai. So, in life we can't always agree. And as my friends here will tell you, I'm normally very, let's just agree to disagree, because there's no way we are going to agree. I mean, me and Little Rich, right, we're mates,
But for years, we have never, ever agreed on the Preeti scenario. We just haven't. It's not always possible. So you can be friends and not agree. But in this case, I can't even bring myself to say, let's agree to disagree. Moving out I is can't. easier than abortion. No. Folk These are personal have some choices. empathy for the dead. Have some empathy for a woman's right to choose what she wants. Choices. We can't judge people's choices, And folk have you Archie. not We lived in can't. India? Fogart, have you not lived in India? Do you not know how an Indian society is? How an Indian neighbor would be like, कि, अच्छा वापस आ गई. How the father and the mother would be worried and cry without letting you know. Don't you know that? Don't you know the parents try till the last breath कि नहीं चलो चलो निभ जाए, चलो ये हो जाए, चलो वो हो जाए, चलो एडजस्ट कर ले, और उसके बाद उनकी बेटी मर जाती है, चाहे वो एस हो या एम हो. कहाँ से आए हो फोकट? ये मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट No, लाइक don't. किस. नो आई एम Ethnically. नॉट डूइंग पर्सनल, नो. बट आप रूरल इंडिया में हो, आप अर्बन इंडिया में हो, आप इंडिया में हो नहीं हो, दैट इज व्हाट आई मेंट. आप कहाँ से आए हो कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हो? एंड it's not कि I've not heard all these things before Fokat, so it's not that I'm getting personal on you. The thing is, I have heard these things from my relatives, from my friends. I've heard these things from YouTube discussions, which they think they are very progressive, and then they talk all this bullshit and call very very regressive practices as ये है इंडिया का. क्या इंडिया का क्या ट्रेडिशनल, हमारा ट्रेडिशनल इंडिया ये है, ये देखो कितना खूबसूरत है. तुम किस मतलब तुम नहीं, मतलब आप नहीं, आई मीन आप नहीं फोरकाट, मतलब जो ये चीजें बोलते हैं वो किस जहन्नुम से आए हैं. वो लोग अब खुद अगर खुद करेंगे, ये कुछ तो कर रही है, कुछ तो दे हैव एक्सेप्टेड इट कि हाँ हमारे सोसाइटी में होता है. There's Earthy's come downstairs. Say hello. Haven't seen Earthy for ages, or we know her as Shilpi anyway. I don't know who that is, but okay. Hi Shilpi. Anyway, to end, I will say a divorced child at home is It's better than a yeah. dead child at the crematorium. Yes. Okay? Please stop. Let's not judge people's choices in life. They made that choice as a married couple. She didn't just go off and so. And even if it was no, even if the आदमी didn't want कि I want a child, तो उसने अपनी बीवी को इतना खुश रखा था कि वो कही कि हाँ मैं तेरा बच्चा पैदा करूंगी. Yeah, just because she is pregnant, she's supposed to have the child and live a loveless shit marriage. Yeah. And I would just Yeah. move out with the child if not compatible. And then मैं अपने आप को भी, you know, support करूंगी, अपने बच्चे को भी अकेले support करूंगी, just because I am a woman and I am supposed to be motherly and I'm supposed to care for a child. तो मैं अपनी सारी जिंदगी झक बना के इस बच्चे को भी पालूं. Preeti's independently for the last 5 years. अभी पैसे देने लगा है ना, वो भी जब कोर्ट 2 ने महीने में उसकी माँ forced मर गई him, साले की. है ना? So, but Preeti's done it eventually. And मैं यहाँ तक मैं close करने लगी हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक मैं बोल के जरूर जाऊंगी कि प्रीति नू ना ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ I'll start again, fucking hell. ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ. ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ say Rita and all the other strong ladies that joined Rita and the movement, because the movement was from the heart and the support was genuine from the heart, because she understood what the girl was going through, right? Or mere aarki jehdi aake ponkan ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ. We did it from our hearts. We had no condition. ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ. ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਆ. But it doesn't matter. ਕੁੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਈ. ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, I don't give a flying. I actually do not give a flying, you know, because I've got my reservations about that. But we'll, you know, would I turn my back on her? No, I'm not going to turn my back on her. Am I pissed off that she gets sucked in by Soma and all that emotional bullshit? Yeah, I'm a little bit, but you know, hey ho. So I'm going to close. Thank you for everyone in comments. I'm really sorry.
I'm going to say I'm sorry I couldn't read them, but I know that the girls in comments and Rich and Richard and Mountain Girl and every one of you, Popcorn, you know, you maintained those boundaries of congeniality, I'd say, and respect when answering a conflicting view. So thank you. Lives aren't really my thing, but I had to do this. I was actually triggered by some other asshole, but you know, I've chosen not to mention her and give her the relevance that she wants. Shilpi says, Folk, what you do, it's your life. You cannot make judgment for anyone else. Absolutely. Samosa Surfer, who are you? Samosa Surfer, it's just your name's making me laugh. Folk, what world are you living in? It's still an aggressive society for women. Yeah, of course it is. Rani says, you're absolutely right. It's Richard's support. Preeti has survived. Absolutely. And I've always said that. And I say it because it's fact. And on the whole, I'd say 99.9% of the time, you know, what we talk about is factual. We don't make it up as we go along, and we don't indulge conjecture. So thank you, everyone who came to this live and just listened to me ramble on. But thanks, Rich. Your inputs were great. They've given me a bit of a wake-up call as well, to be honest. Thank you to you too, honestly. And Mountain Girl, as ever, you're just brilliant. You really are. You know, I love your strong personalities. You know, you're our next generation. We need you. Because I feel, you know, the older I get, or maybe I'm beginning to question if I've lost my spark. If I'm beginning to question whether I've lost my strength sometimes to rise up to the fight. Although if you look at my community post, you wouldn't think that. But I'm just wondering if I have. But then I look at Richa, as in, you know, Richa Mehfil Mitrandi. I look at the Rich, Mountain Girl, Rani, Popcorn. You know, there's a long list. And, you know, you're strong women. You've got good opinions. You've got the courage of your convictions, and you put them across very well. So that's it from me, really. Have a lovely Halloween in the dance. Has she changed her name? Is she the one that used to come and talk totally? I think Rich has gone. Rich has left me. Little Rich has left me. Okay. So, bye. Have a lovely evening, everybody. Thank you for listening. Thank you for being part of this conversation as well. And actually, Folk, thank you for coming on, because it's a bit of an insight into this world on how we just assume that everybody's going to think the same because we feel a certain way. And I'm not saying we're a bunch of bra burners and, you know, crazy feminists. We're not. But there's an assumption that when something like this happens, we just assume everyone's going to feel the same. But it's a big, diverse world we live in, and everyone has their own point of view. And like I said, this time I can't, with my hand on my heart, I cannot say I agree. Not even to keep the peace, because then that would defeat the object of raising our voices. So I'm going to end the live. I'll just let you know, I don't know what it is, but my lives just take forever to upload. So I'll leave it there for as long. Some people think, private live karke private karti. Private karo tusi apni bhੈਣ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੁੜੀਆ ਵੇ. Okay, changa bye. Bandy? Just as I was about to go.
It's more aggressive for me to not move out of a marriage. Can't raise a child alone. Why is it so difficult to raise a child alone? Well, actually, I won't close. So let's have this one-on-one with you and me then, folk art, right? Why is it so difficult to raise a child alone? Well, it is dependent on your circumstances. So if you've got that family support, and I'm talking about India now, I'm not talking about people here in these countries where we've got the facilities to put our kids in childcare, okay, or where we're very blessed with extended families and therefore they look after our children. In India, it's very, very difficult. Now, if you're from a professional background, and you're earning well, then yeah, you could probably put your kid in, you're working in a big corporate and you're on the complete opposite spectrum of Indians arm army, then yeah, you can bring your kid up on your own, right? With a little bit of help from your family and you're financially secure, then great. But if you're not in that position, you haven't got the family that's going to support you, and because they can't support you and look after your child, you can't go out to work, but you do what you can to generate revenue for your child by working, and that could be working online, i.e. working from home, right? It is not easy. Because in India, unlike these Western countries, you have to pay for everything. Here, education is free. Where you're living, education is free. You've got a good medical system in place. You've got laws that work with you to help you get what's rightfully yours, and more importantly, what's rightfully the child's entitlement. So, does that answer your question, or do you want me to elaborate? Women getting pregnant is her own choice. No one forced her to have sex around her ovulation time. Oh, yeah, because we all go around with like our ovulation tracker, don't we? We actually go around with an ovulation tracker. Jesus wept. Folk art. Really? Do you think? I mean, India के आबादी के हिसाब से ऐसा नहीं होता मेरी बहन. Oh God. I don't even want to laugh. Yaar, what the hell? Yeah, getting pregnant is not always her own choice. Jeez, I can't get my head around that. You know, what world are we living in? What world are we living in? The likes of this Soma Devi and this Giribala, they should have had ovulation trackers and not given birth to their sons, because what they want has ended up, basically, there's a soul lost because of him, and the other one, she nearly did. That girl had anxiety issues because of her beakmonger in-laws, due to which she was on medication, so it would have been unjust for the child to come into this world with a mother. Absolutely, and that's exactly what Little Rich said. You sort of contradicted yourself there, love. She married so she knew she can get pregnant. You're contradicting your earlier statement. I, for one, do not want this to blow up into an all-out war of words, right? One, because I actually haven't got the energy. And two, I don't want to have that type of conversation. Because this isn't about her marital activity. This isn't about the conscious choice of having or making a child, right? You're going off on a tangent, and this is very much, it's almost like a form of deflection. And now is not the time to deflect from the fact that the child is dead.
can we let's put things into perspective, Folkart. I will ask you again, please tap into your inner woman, right? And please just press that button for empathy. If you cannot press that button for empathy, because, you know, by the grace of God, you have never been in that sort of situation, but although you said you have, and because you have said that you have been in a similar situation, I am asking you to press your empathy button. If you can't do that, please have some respect for the dead. She deserves that much dignity. And you're in the minority as far as I'm concerned. I'm not talking about this live and the ladies that are listening or in comments. In general, this isn't just something that has gone viral in India. This is global news. Okay. So if you think that you want to stand out because, you know, you have a different point of view or a viewpoint or your observations are different, good luck to you for having these conversations with like-minded people, because there's not a single person here that is like-minded. Not a single person. There's not a single person here that is going to agree with you. And I don't think there will be a single person who will listen to this live who will agree with you. Smosa Sefa, no, we won't get insulting. We don't do that. चलो मैंने बोल दिया अगर किसी ने ऊपर आना है to have their say, their last word, or if they do feel like some other emotions have been riled or they've been triggered, तो मैं आज तो मैं खुली छुट्टी देनी है, आके ऊपर बोलना है तो बोलो, नहीं तो भैनों मेरी हो गई बस, मैनू तो करना पैना बंद, इन्ना नहीं बोल हुंदा मेरे तो हुण। कम्यूनिटी ते जिन्नियां मर्जी गालां मैं कढ सकदी हां, उत्थे फिर मैनू बोल के थोड़ो कढनियां पैंदियां आ। Yeah, I feel that headache too, Rich. It's a really heavy topic. So, Richard, pani piyo and rest up. Look, Folkart, मैं totally तो बुलाती हूँ वो ही आपकी class, but I don't know what that means. Hi, hello again. Hi. Richard, Hi. Hanji. pani piyo. I'm just saying to Richard, pani piyo. The Richard's got a headache, and it's a heavy topic. This is really, and we're being challenged. We're being challenged, and we're still trying to maintain a decorum. I'm not someone normally who manages to adhere to a decorum, because I don't have a decorum to my lives, because I am just what I am. It's taken me more energy not to say stuff than it is to say stuff. Do you understand, Rick? अच्छा सुनो क्या कहते हैं, so to the other Richa ji, thank you so much, thank you for time out, thank you. मैं इतनी देर से ना तड़प रही थी, I like oh my god, but I was like कि नहीं, let's not do that, नहीं छोड़ो, नहीं उनका opinion. Then she would say something new, which would be like, hello, hi, thank you, Richa ji, thank you so much. मैंने इतनी सिंसेरिटी से मैंने आपके लिए कभी फील नहीं किया जितना अभी फील कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मुझे पता इतना हेडेक होने लग गया ना, मैंने फिर सोचा आप सभी लोग हो तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, लेकिन मेरे को ना इस लेडी की एक बात नहीं बार पसंद आ रही। अच्छा, मैं इसीलिए ऊपर आई हूँ, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इससे पूछना चाहती हूँ
कि उसने अबॉर्शन करवा दिया। एक बात तो पहली बात कि कुछ टाइम पहले अगर कोई भी लेडी है डिसाइड करती है, इंडिया में ठीक है इलीगल है, लेकिन हम जहाँ पे फॉरेन में भी लीगल है। रहते हैं, है ना, कुछ कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने वीक से पहले आप करवा हाँ सकते हो, विच इज वेरी नॉर्मल। उससे आप किसी की जान नहीं ले रहे हो। मैं इस फेवर में नहीं हूं मैं कि करवाना चाहिए या, लेकिन जब हालात ही ऐसे हैं भाई, वो एक बच्चे को पैदा करके करती क्या? अगर उसको लग रहा था कि वो कैपेबल नहीं है, वो रेडी नहीं है, तो क्यों लेके आए? क्यों लोग फोर्स करते हैं किसी भी लेडी को कि बच्चा आना ही चाहिए दुनिया में? वो उसकी चॉइस है। अगर उसे रेज करना है तो चॉइस भी उसकी होनी चाहिए कि उसको प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है। रही बात फिजिकल रिलेशनशिप की, तुम डिसाइड करोगी, है ये एक नीड है लोगों की, ठीक है, जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, चाहे मैन है चाहे वो मैन है, सबकी है। अब तुम डिसाइड करोगे कि औरत को करना चाहिए, फिजिकल नीड पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दुनिया में कितने बच्चे हैं बेचारे गरीब, जिनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, है ना? उनका कभी सोचा है? अगर मैं तो कहती हूँ, अगर उनके पेरेंट्स ने भी सोचा होता ना कि एक प्लान करना है या 2 इतने इतने बच्चे गलियों में या स्लम एरियाज में इतने इतने, वहां जाके भी मैं तो कहती हूँ उनको बताना चाहिए कि मत पैदा करो बच्चे अगर तुम रेज नहीं कर सकते हो। क्या फायदा ऐसे बच्चे को? अगर मान लो बेबी बॉर्न हो जाता उस, है ना, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता, फिर क्या? फिर उस बच्चे का क्या था, है ना? कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं, गुड वे में भी और बैड वे में भी। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है कि उसका, जिसने बच्चा पैदा करना है ना, अच्छा बोल रही है बार बार फादर का दुख, फादर का दुख, क्या उसको जाके पूछा तूने फादर को कि कितना को दुख हुआ फादर को? फादर साथ में ही था ना जब डिसीजन हुआ, सब कुछ हुआ, तो फादर साथ में ही था ना, रोक लेता। अबॉर्शन के बाद ही क्यों माँ को बताया जाके? पहले बताता, रोक लेते उसे करवाने से, है ना, उसके ऋचा साथ जी, अच्छा बिहेव करते, काउंसलिंग करवाते उसकी भी और अपनी भी, ऋचा है ना? जी रुको, हम्म। रुको। वो गए थे काउंसलिंग के लिए, हम्म। और ये इसने अपनी मदर को या अपनी फ्रेंड में से किसी को इसने ये कहा था कि हम्म। ये बोल रहा है कि ये बच्चा मैं किसका करके लाई हूँ, कि मैं कैसे अच्छा कर हाँ लूं, देखो, कि ये बोल रहा बिल्कुल। है मेरे बच्चे को, मतलब दिस इज व्हाट ही इज हम्म। सेइंग टू मी। बाद में हाउ कैन रिश्तेदारों आई में गिव बोलता बर्थ टू रिच, दिस चाइल्ड? बाद में रिश्तेदारों को बोलते, फिर डीएनए प्रूफ करवाते रहते, वो बच्चे का आना हाँ क्या, है ना, है ना? वो बच्चे का आना क्या इतना ही जरूरी था कि बच्चा 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 जो अभी पूरी तरह से आई थिंक डेवलप भी नहीं हुआ होगा यूट्रस में, उसकी इनको फिक्र ज्यादा है। वो पली पलाई किसी की 30 साल की बेटी चले गई, उसका दुख नहीं। कितनी, मैं ये सोच रही हूँ कि कितनी इनकी चॉइस अपने हिसाब से बदल जाती है, कि मैं उन औरतों को सिंपैथाइज करती हूँ जो बेचारी बोल नहीं पा रही, जो क्या उसको कहते हैं, कंप्रोमाइज कर रही हैं। लेकिन हाँ, जो अगेंस्ट जाके सिचुएशन के लड़ती हैं, वो लड़कियां भी इनको पसंद नहीं। अब जैसी ਉਹਦਾ इसकी, ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਂ हाँ, है ਹਾਂ ना, ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। वही ना। और ये अगर चली गई है तो ऐसे गंदे ससुराल वालों को बचाना है कि नहीं, उनकी वजह से नहीं मरी, अपनी वजह से मर गई। ये ऐसी लेडीज है ना, जो ये फोकाट जैसी लेडीज, इनकी सोच अजीबोगरीब सोच है भाई। इसको समझना मतलब कि ये इस तरफ भी पैर रखती हैं और ये उस तरफ भी पैर रखती हैं। अब ये किन औरतों को सपोर्ट करती है? ये उन औरतों को सपोर्ट करती है जो कंप्रोमाइज करके जुबान नहीं खोलती हैं, ससुराल में ही जैसे तैसे गंदे माहौल में, गाली गलौच में, अपनी मतलब वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, डिसरिस्पेक्ट कराते हुए सारी जिंदगी जानवरों की तरह काट देती है। उन औरतों के साथ इसकी सिंपैथी है, ओनली ओनली सिंपैथी है, उनके लिए करना कुछ नहीं है। ये कैसे, और ये कैसी चॉइस है भाई? ऋचा जी, एक और चीज, और ऐसी ही औरतें 2 बच्चे 3 बच्चे, या एक बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा पैदा करके अपने उन बच्चों को भी रुलवाती हैं, कि जब वो देखते हैं कि मेरे माँ बाप कितना लड़ रहे हैं, मेरी माँ देखो रो रही है, मेरी माँ पिट रही है, कितनी अच्छी बात है। बच्चे हम्म। पैदा करो, लेकिन है ना, बच्चों को बिल्कुल। दिखाओ कि देख देख मेरे को, मैं पिट रही हूँ, देख आए आए, और लेकिन देखो, एडजस्ट करना है ना। 5 महीने की शादी में, आई डोंट नो, 4 और 5 महीने की शादी में अगर उसने ये डिसीजन लिया है कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अब हमारी कंट्री में इतने ये सेलिब्रिटीज हैं जो 40-40 साल के बाद बच्चा प्लान कर रहे हैं, 40 की हो जाती है एज, 45 की हो जाती, पहले अपना कैरियर देखते हैं, उसके बाद बच्चा प्लान करते हैं। अगर उसने भी, उसको भी लग रहा होगा कि अभी बहुत ही जल्दी है, 4-5 महीने शादी को हुए, हो सकता है वो टाइम लेती,
है ना, आगे कौन सा प्रेगनेंसी रुक जाती है, हो नहीं सकती थी, फिर क्या हुआ अगर उसने उस चीज को जैसे वो नहीं बनाते हैं, उस चीज को इन्होंने एक पिलर बना लिया, उनको उनकी गलतियां ससुराल वालों की जस्टिफाई करने के लिए। भाई वो गलत थी क्योंकि उसने अबॉर्शन करवाया, क्यों? ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, and then that becomes he said she said, because we will only talk on facts। ਜੋ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। And she has the freedom to make that choice। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਸਹੀ ਆ, but only she knew her circumstances। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। 25 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, you know there is something fundamentally wrong। So then she made that life choice। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ कमेंट नहीं दसदे हुण, so मैंने इसको टाइम आउट कर दिया, इतना हेडेक नहीं लिया जा रहा। अच्छा, okay, ठीक है। इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। नहीं निंद जी कह रही है कि ससुराल वालों पे अबेटमेंट ऑफ एस नहीं बनता है, ये बहुत कम पीरियड। क्यों नहीं बनता? आपने किसी को ना एक कमरे में हफ्ता बिठा के एक ही चीज बोलते जाओ, वो बंदा भी एंड पॉइंट पे मजबूर हो जाता है कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठाने के लिए। फिर तो 5 महीने कहती, 5 महीने में वो मायके भी गई है, हनीमून पे भी गई है, तो क्या मायके गई, हनीमून गई, जो उसके दिमाग पे जो चीजें चल रही थी या जो ये लोग उसके साथ कर रहे थे, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तुमको क्या पता उसकी सिचुएशन कैसी थी? तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि इतने टाइम में ये नहीं हो सकता? अरे क्षण भर में चीजें बदल जाती हैं। ये एक कहते हैं ना, ये एक सेकंड की बात होती है कि कौन, जब कोई इंसान कोई अगर अपनी मर्जी से भी ऐसा डिसीजन लेता है ना निंद जी, या किसी के प्रेशर में आके भी लेता है ना, तो ये जस्ट सेकंड्स की बात होती है। लोग घंटों नहीं लेते हैं सोचने के लिए। कई बार आपके दिमाग पे कोई चीज इतनी हावी हो जाती है कि आप सोच ही नहीं पाते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो इतनी ही गलत थी निंद जी, अगर ये बोलते हैं उसने एस किया है, अगर वो इतनी ही गलत थी तो वो तो इनको नाको चने चबाती निंद जी, वो कभी एस करती ना, है ना? वो गलत तब होती अगर इनको दबाती। वो तो अगर उसने खुद भी ऐसे किया, मतलब कि कितना उसको मेंटली परेशान किया गया होगा, कितना उसको टॉर्चर किया होगा कि एट द एंड she choose to do so। And that is aiding and abetting। If you corner someone, right, you corner them, or she's come from pure sunshine and then within 25 weeks you've put her into pure darkness, then that is aiding and abetting। You've literally, you have sucked the soul out of that child। And literally, I mean that literally। Why? Because she's passed। और उस सास की सोच तो इसी चीज से समझ आती है। ऐसी गंदी औरतें जो ये सोचती है कि किसी की बेटी को अपने बेटे के साथ शादी करके वो इसलिए लेके आती है ताकि वो उनका खाना बनाए, उनका घर संभाले, उनके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए। क्यों? आपने जो जानवर भी पाला होता है ना, हाँ, आपने जो जानवर भी पाला होता है ना, वो जानवर भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीता है। फिर एक इंसान, एक बेटी को आप लेके आते हो, आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग करे? क्यों? आप कोई गुलाम खरीद के लेके आए हो, है ना? ये किसने डिसाइड किया पुराने जमे से? ये जो फालतू की औरतें कहती है ना कि क्या उसको बोलते हैं, शादी के बाद ये घूंघट जरूरी, शादी के बाद। किस सोसाइटी में जी रहे हो भाई? है? और ये जज की सोच देख लो, पौधों को पानी नहीं देती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। समझ तो उसकी इन 2 पॉइंट से ही उसकी सोच समझ में आती है कि उसकी सोच कितनी गंदी है। इतनी अच्छा लड़की को आप शादी करके लेके, तूने पौधे लगाए, अगर कोई होती ऐसी वैसी लड़की तो इसको बोलती कि भाई बुढ़िया तूने पौधे लगाए, तू देख, मैं क्यों तेरे पौधे देखूं? हाँ, वही ना, कि तूने लगाए, तेरे को शौक है तो तू पानी दे, नहीं दिया जाता तो नौकर रख ले। उसके लिए तुझे बेटे की शादी करनी जरूरी थी? रोटी बनाने के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, ऐसी चीजों के लिए तुम लोग एक काम वाली रख लो। है? एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की की जो जिंदगी खराब कर रहे हो, उसको लाके अपने घर का नौकर बनाना चाहते हो। ये सोच एक जज की है, सो कॉल्ड जज की। देख लो मेरे दिमाग च होर scenario होया। There's another scenario I've got in my head and I need to vent it।
such a powerful family, pade likhe, he's a criminal lawyer, she's a judge, they're well connected and all the rest of it. ਇਹਨਾਂ the network ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. Why was he on a dating app? Probably because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ. That's why he was on a dating app, because ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, he doesn't have to put the, I don't know if I'm Arthur or Martha. I am a mummy's boy. I have got drug issues. I have got this. I have got that. You don't have to put any of that. Neta, in these sort of, what they call the elites, apne aap nu elite samjhde a, main nahi inhan nu elite samjhdi. These elites, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, because again, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦੇ to strengthen their network and strengthen their power. So again, there's a big question mark of why would he be on a dating app? And Earthy Geria, if she's doing an abortion, how's it making her a culprit and give clean chit to the husband? Going by your logic, Bocart, innocent is alive and culprit is dead. Yep, that's the logic they've applied. And like I said, they're going to be in the minority. And Samosaji is saying, if the idiot husband not a convict, then why is he absconding? Aaj surrender kiya hai, wo bhi bahut galat jagah. Yeah, because they're playing the law, because they know the law. And ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ law ਨੂੰ भी अपने it's just a pack of cards. निंद जी, जहां पर कनेक्शन है वहां पर किया है. समझ रहे हो, जहाँ पे कनेक्शन है वहां पे किया है, जहाँ पे वो अपनी गेम खेल सकते हैं ना, वहां पे किया है उन्होंने. वो जज नहीं कह रहा था, oh I think it was to pay condolences, that's what the call was for. Shut up. I have 3 points to raise. Go on. एक तो the calls that were made, the 46 calls that were made, they were made after the girl had committed or was MS, ठीक है, वो उस वक्त था. तो उस वक्त तक लड़की के घर वालों को भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आपकी बेटी के साथ ये हो गया है. उससे पहले ये सारी कॉल्स की गई थी जज को, सीसीटीवी ऑपरेटर्स को, लोकायुक्त आई थिंक वहाँ का कोई वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होता है कोई, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन होता है, अगर कमेंट सेक्शन में किसी को पता है तो वो बता सकते हैं. बट ये है कि वो बहुत पावरफुल होता है उस एरिया के लीगल स्टैंड, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो दूसरी चीज, a marriage or a relationship between a husband and wife is not done just to have babies. कि अब तो शादी कर ली, अब तो बच्चा ही होगा, ये शादी equals बच्चा. No. आज के जमाने में आज का जनरेशन तो पता नहीं, हम जैसे लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते कि शादी इक्वल्स बच्चा. 1 साल में बच्चा चाहिए ही चाहिए, 5 साल में अगर बच्चा नहीं होता, हाय तौबा IVF करा लो. नहीं, ये चीज नहीं चलती, ठीक है. और जिसको ये चीज लगता है कि ऐसा होता है, दे कैन गेट लॉस्ट फॉर ऑल आई केयर. एंड तीसरा पॉइंट मैं भूल चुकी हूँ. यस, तीसरा पॉइंट याद आ गया. तीसरा पॉइंट, ये आदमी आज जबलपुर हाई कोर्ट गया था, आई थिंक जबलपुर के कोर्ट में गया था, ये तो पक्का है, ठीक है. एंड ही वाज सिटिंग इन द चेम्बर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, a person who is accused of a person who was absconding and came to surrender. He was sitting very, very relaxed in a chambers of a district judge. So that They'll shows probably put him under house arrest, Rich. Huh? They won't take him into custody. They'll put him under house arrest. Yeah, bail, or they'll allow bail. It's a sort of a bail. I don't know if they have it in India. बस ना निंद जी, ये सारी चीजें प्रेस और पब्लिक को शांत करने के लिए करी जा रही हैं. ये अपनी जिंदगी नॉर्मली जिएंगे, कुछ भी नहीं होगा केस का, क्योंकि पहुंच है, पैसा है ना. पहुंच है, पैसा है. और जजेस को पीछे का पैसा पता है, पर केस कितना मिलता है? 5-10 लाख मिनिमम. और इमेजिन द नंबर ऑफ केसेस दैट दे गेट, एंड उसमें उनकी कितनी कमाई होती है. और अगर वो 7 लाख खर्च कर दिए, क्या एहसान कर दिया. I've got a point to make about Preeti here, just to make something very, very clear, because ये बात लोग बहुत उठाते हैं, और मुझे इस बात से सख्त चिढ़ होती थी. सख्त मतलब
And Rich, you'll agree because we've had this discussion. I mean, no, you might not agree, but we've had this discussion. You know, कि प्रीति कोर्ट क्यों नहीं जाती थी, है ना? कोर्ट क्यों नहीं जाती थी? Because this is the power of Bessa and corruption. Because Do you that think he has that bastard, much hang on, paisa? yeah, hang on, let me. That bastard, yes, he did, because he stashed away a lot of money. Doesn't spend a penny. Okay. Rips women off. First he lived off Preeti's money, then he lived off Sarika's money, right, and never spent a penny from his own pocket. What was I going to say? Yeah, so the reason she didn't used to go to court was because her fucking lawyer used to advise her not to go because he had it all under control. And why did she change lawyers? Because this fucker paid that lawyer to fuck the case up. His lawyer was then in cahoots with her lawyer. So that's the reason that she didn't used to go to court, because ਉਹਨੂੰ ਇਹ assurance ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ don't worry, I've got it covered, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. So I hope I've made myself very clear about that to everyone who said, oh, she should have gone to court. No, she's a naive, very sheltered young girl who was not worldly wise. She did not understand when she got played. She's still being played today. She is being played. Her emotions are being played with. Her brain being played with. Yeah. So those women, they can sit there day in and day out and talk all the shit they want about her. But ultimately, know one thing, that you supporting Bunku and you supporting this Soma Devi, knowing that they are exactly the same as this Giridar or whatever her fucking name is and her son, that's what you're doing. You are you're actually supporting an almost convicted criminal, because it's not long now before Bona will be convicted of his other offences, his criminal offences. Forget civil offences, he will soon be convicted of his criminal offences. Phoebe, to support Kari Jana, it says more about you women than it does about women who are strong enough to raise our voice for what's right and what's wrong. Everything we knew, all the truths we knew, they're all out in the open now. But Phoebe, inanini hatana. You know what? Pride before a fall. Because if they don't support him now, then they're going to look like losers. Well, fuck you all, because you are all losers. And on that note, I'm going to say good night. So Richa and Rich, thank you both very much for coming on to the panel. Again, Mountain Girl and everyone in comments, and Shilpi, it was lovely to see you. Aditi Samosa Surfer, cute name. I'm trying to figure out who she is, but I can't. If I start going up, I know Popcorn came. Where am I going? I'll say thank you to Folk Art as well, because that gives us an insight into what the world's really like. You know, there is, if we look at the opposite end of the spectrum, there are still people who will side with what is, you know, it defies logic. It absolutely defies logic. And who everyone else, Rishi, I think Rishi Ji came, Vandana came, Kis ka naam hai, Amrit Ji came, Rani came. Okay, Nandri. Everyone, right? So good night, everyone. Much love and chill. Sari chill karo hon. Bye bye.